गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टाइम कितना हुआ? सर 1 मिनट बाकी है 7 बजे। कोई आया नहीं आज यार, क्या बात है? और ओपोनेंट टीम भी नहीं है। हम्म। ओपोनेंट टीम भी नहीं आई सर। हाँ वही। कहीं हम गलत जूम कॉल पे तो नहीं आ गए? नहीं सर, R.1 ही है। अच्छा, अच्छा। एड्रियन, 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 यू आर ऑन म्यूट। गाइस, कैन यू हियर मी? यस यस सर, यू आर यस ऑडिबल। सर। तो सुमित, यस सर। तुम आज रिसर्च हैंडल करो। ओके। ठीक है। हम्म। और कौन? एड्रियन, एड्रियन क्या म्यूट पे क्यों है एड्रियन? नहीं, उसको सर आवाज़ नहीं आ रही थी। अनम्यूट है वो। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया, है ही नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ। ओके। और कौन है अपने पास? तुमको रिसर्च हैंडल करने को बोला ना? हाँ सर। अच्छा। हाँ सर, एड्रियन इज हियर। एड्रियन, क्या सुनाई नहीं दे रहा उसको? एड्रियन। सर आवाज़ नहीं आ रही है उसकी। Are you able to hear me? Hello? यस हाँ, यस। अभी अभी आ रही। विल यू बी एबल टू Hello? हैंडल Yes, लॉजिक but are you टुडे? able to hear me? या एड्रियन। I'm not able to hear. हाँ? Hello? आर यू नॉट एबल टू हियर अस? साउंड लाइक ही इज नॉट एबल टू हियर अस। आई थिंक सो। Hello? या एड्रियन, कैन यू हियर अस? Now I can hear you. Now I can hear you. अच्छा। I think there was some issue. कैन यू Yeah. हैंडल लॉजिक टुडे? Sure. Yes. You know the point system, right? Yeah, yeah. 20 points. Yeah. Right. 20 points, right, for each question. Yeah. And Lakshmi, you handle the presentation. Lakshmi, Lakshmi? Yes, sir. Lakshmi, can you handle the presentation part today? Okay, sir. You know the point system, right? Yes. ठीक है. So you do after every question in the audience period, you send me your scores. Okay?
Yes. And I mean, if you can write down, like when you're doing presentation, just write down scores for presentation, scores for logic, scores for research. That will help me a lot. Mhm. ठीक है? Okay. So, matlab we have to send you the marks for each partner. Like I'll send you the marks for presentation, right? Yeah. For that question, are you giving 12/8 or 8 or 13/7 or whatever? Right? Yes. ठीक है. Start करें? Yes, sir. अच्छा. So there's no external crowd. So shall we skip the corporate video or play करें हम? नहीं है, एक्सटर्नल क्राउड है ना, हाँ, एक्सटर्नल क्राउड है. ओके ओके ठीक है. हाँ तो विनय कॉर्पोरेट वीडियो दिखा. Yes. कॉर्पोरेट दिखाएगा, विजन दिखाएगा, विजन दिखा दे या जो भी है ठीक है दिखा सर. दे. नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम ईदर वे. ठीक है सर. सर आवाज आ रही है? अभी तो नहीं आ रही. एक मिनट. Did you know that the common man of today leads a better lifestyle than the kings and queens of 100 years ago? Not because he has as much money as they did, but because of innovations and advancements in technology and society. These advancements promise better health, better hygiene, and better diet to the common man than the kings of the past had. This is the true advantage of innovations brought about by positive business processes. The Indian stock market represents one such positive business process. Come to Dozen Diamonds, where we have dared to imagine an Indian stock market where the retail investor can invest without anxiety about the market volatility, where investor does not wonder about idiosyncratic behavior of company leaders and instead focuses on the productivity of its employees, where he looks forward to invest in the company he loves and believes in, where he recognizes that he is in control of the future of companies he invests in, rather than trying to predict it. We believe such a stock market will bring financial well-being to the life of every Indian. Dozen Diamonds aims to simplify the market with our unique stressless trading method. Whether you're just starting out or already experienced, we aim to bring you technologies which will make investing easy so you can focus on your goals, not the guesswork. Now imagine this. You invest in a company, it grows, it hires, it innovates, it pays better, it shines brighter. And you earn and grow not just with higher returns, but with better pay and better living standards. The stock market may rise and fall, but the vision must stay steady. With Dozen Diamonds, right strategy, smart recovery from any losses, and patience, you can invest without stress. So ask yourself, where should your money sleep? In a locker of gold or in the engine of a growing India? Invest in Indian businesses. Fuel the future. Turn your capital into a catalyst. Because for your participation in the stock market to be consistent, it needs to be stressless, following the Dozen Diamonds principles of investing. The growth of the country lies in your investment in the stock market. In the growth of your country lies your growth. Dozen Diamonds empowers every investor to achieve financial freedom through stressless investing, helping drive India forward on its path to becoming a developed nation. By building a country of investors, Dozen Diamonds strives to lead India to be the Vishwa Guru of 21st century. Okay. sir. No, hold on. Go back to the image. Yeah.
image पे जाओ. Yeah. So I just wanted to take a minute to introduce the topic for today's debate. Today's debate is primarily focused on gold and its significance within the Indian community, and even more specifically, it is focused on our passion and our obsession with gold, and whether that is detrimental to our economy and our financial well-being, or is it really a positive addition to our portfolio. In general, the Indian investor tends to believe that gold is a solid investment, and he does not recognize that it basically blocks the flow of cash within the country. Gold comes with its strengths and its weaknesses, and it has a big impact on the Indian psyche as well as the economy. So today's debate is focused on whether it's a good investment or whether it hampers the Indian economy the way it gets stored and used by the Indian households. All the best to the two teams. One team is going to talk for the topic and the other is going to talk against the topic. The team talking for the topic is the sales team at Dozen Diamonds, and the team talking against the topic is the instructor team within Dozen Diamonds. So all the best to both the teams. Please proceed. Thank you, sir. Okay, sir. Thank Vinay, you. just Thank you. stop sharing. Yes. So which team goes first? The instructor team is going first. Acha, okay. Okay. So Shall there we are four start? questions that are going to happen. Go ahead with the first question. Yeah. Okay. A very good evening, everyone. Diving straight into the topic. The first question is that to what extent does India's gold consumption impact its current account deficit and overall economic stability? Very quickly, I'm just going to tell you that what is current account deficit. Screen pay, you can see there's a formula given over here. In short words, if the numbers after plugging in each and every value, if the number comes positive, it is known as current account surplus. And if the number comes negative, it is known as current account deficit. Now here, India's GDP is $4.19 trillion and India's gold import is $50 to $60 billion per year. So for ease of calculation, I have taken average of 50 and 60, which comes to $55 billion. So if I have to calculate the gold import percentage of GDP, that comes around 1.3%. See, this clearly shows that India's relationship with, So this clearly shows that India's relationship with gold is not an economic burden, but it is an economic buffer, and the data clearly shows it. In the next slide, I'm going to show you all the measures or the scale, which simply tells that until what extent does the current account deficit means that the countries are in safe hands or in a crisis zone. As you can see it over here. Wait a second. Yeah. As you can see it over here, India is being labeled as orange. Here is the orange part, and it is clearly above our safe zone. So this simply means that our current account deficit is placed at a very safe zone. Now moving on, going to show you a very interesting thing. As you can see it over here in this data, it is being shown that our current account deficit percentage of GDP was at minus 0.8% in the entire 2024. And abhi tak, in 2025, our current account deficit is only to 0.2%. Now, a simple question may arise ki till now we have only seen only 2 quarters of the 2025. So let me give you a very simple example. If this is the data which I have collected, this can easily make you understand that what I'm going to explain you about. You can easily see in first quarter of 2024 and second quarter of 2024, the gold imports were quite similar, but in the next quarter 2020, third quarter of 2023 and fourth quarter of 2024, the gold imports were quite higher. Now the only reason why I'm comparing the Q1 and Q2 of 2025 to Q1 of 2024 and Q2 2024, because till now we have only seen these 2 quarters and the next 2 quarters are yet to be seen. Even if you guys
complain that this is not a fair comparison. Even during the first 2 quarters of 2024, you can easily see that the current account deficit was same as the entire year, which was 0.8%. So this simply shows that there is absolutely no relation with the current account deficit as per the gold import. Now, in the next slide, I'm going to easily convince you guys that you can easily see that the total gold import during the financial year 24-25 was 58 billion, and the total and the total imports were 689 billion. If I have to take a round number, I will calculate it by 698 billion. So this simply shows that percentage of gold imports of total imports is only 8%. Gold forms just 8 to 7% of India's imports, while oil and other electronic goods combined gives me around 50 to 60%. Yet gold gets blamed for not getting for not the yet gold gets blamed, but not the bigger import categories get blamed. See, even if we take the highest gold import year, let's say if we take 1.5 years, 1.5% of GDP, the category is so small that it simply cannot destabilize a 4 trillion economy. If you try to understand that, if anything, the reason behind our current account deficit remains stable at 0.6% of GDP is because the gold demand is easily being absorbed by India's massive surplus. And in this example, in this data which I have shown and the calculation which I have shown, you can easily see that gold is only 8% of the total imports. And despite being so much imported during the last 2 quarters of 2024, yet our current account deficit has been really been good in the next first quarter of 25 and second quarter of 2025. So this simply shows and proves my point that gold is not an economic burden, but it 30 is an seconds more. economic buffer to our Indian economy. Yeah, I'm done. Thank you. Okay. All right, sales team, please go ahead for the topic. I'm sharing my screen. Just wait. Okay. My screen is visible. Sure. Start karo, start karo. Just a second. Click on Well- present. Beside share, click on present. I hope the Right. time has been counted. Yeah, the clock is on. Yeah. So, yeah. Screen is visible? Screen Yeah. is visible. Yeah, Uzefa, go on. Okay, so to begin with the topic, like straightly jumping into the question, come to the next slide, please. Uh, to what extent does the Indian gold consumption impact its current account deficit and overall economic stability? So, gold is deeply rooted in our culture, and from weddings to the festival, it seems as a symbol of prosperity. But the most people doesn't realize that the emotional and the cultural fixation on the gold comes with a heavy economic cost. This section will understand like how the obsession of the gold directly impact the current account deficit. Come to the next slide, please. So this chart clearly shows as the connections between the gold import and the Indian current account deficit, which measures how much more we spend on the imports than we earn from the export. If you look at here in the year 2011 to 2013, the gold import raised sharply and the current account deficit hit nearly negative 5% of the GDP. The same pattern is being repeated in the year 2020 and 2023. This proves that whenever the Indian imports more gold from the foreign exchange outflow uh, increases, which weakens our currency and increases the financial pressure. Every gram of the import gold added a weight on the Indians' economic burden. Come to the next slide, please. So, just to give you like summarize relationship between this, the two major sparks in the gold import in the year 2011 to 2013 and 2020 to 2023 both aligns that the India's worst GDP figures. The gold is the second
only to the crude oil in Indian's biggest import. But here the key difference is oil fuels the production in the industry, but the gold fuels the consumption. Gold doesn't generate any export income and create jobs. It simply drains the dollars out of the country. So oil drives factories, but the gold only drives fascination. So please go to the next slide. Next slide. So Indian economic is stability keeps suffering because of the culture and the investment driven gold demand. So the data proves statistically and causally that the gold is the both financial safe haven for the individual but not for the economy. Go to the next slide. So this is the report from the World Gold Council report of 2023 and 2024. According to the World Gold Council, the Indian gold demand is in the year 2023 was about 562 tons, and it increased 803 tons in the year 2024. And if you see here, out of the around 70% of the gold was used for the jewelry, not investment or production. This shows that the most of the gold in the India is for consumption, not for generating income or the growth. So we are not investing in gold, we are decorating our debit. Go to the next slide. Basically this data that India imports almost all of the gold which is being used by the consumer, and the domestic gold demand specifically, like it is basically for the jewelries purchase and import bills, winds up the trade deficits, and the money that could be used for factories, startups and innovation instead of that goes to the importers. So this is about it, and go to the next slide. As we see in the graph, come back to the other slide. In the graph, yeah. So if you see over here the blue section, the jewelries, if you see that the blue section is only being invested, rest the orange section is being used to make jewelries, which is about 70% of the Indian total gold demand, so which is being used for the gifting and other purposes. 30 seconds since left. we import, since we import nearly all this gold, it reduces the larger foreign exchange outflow, widen the trade deficit, and in short, the gold fixation on the gold keeps wealth locked away and unproductive, uninvestment, and untaxed while the economy pays the price. Gold may be timeless, but our economic growth cannot afford the wait forever. So this is about our presentation, that how gold affects the current Time up. account deficits. Thank you. Shall we start the rebuttal? Sure, sure. Yeah, Josefa, just unshare. No? Javed, please unshare. Oh, sorry. Let me know if my screen is visible. What you said about exporting versus importing gold, I totally agree with that. I completely agree that we are importing a lot of gold as compared to the export. But the data you showed, which was during 2011 and 2023 of the current account deficit, which was widened, blaming gold alone oversimplifies the entire issue. See, the real reason during that time was the global crude shock and the policy paralysis during that entire period, not just gold imports. Secondly, oil was the bigger culprit, not the gold. My point here is not to blame the oil, but my point here is just to defend the gold. While oil imports made up nearly 65% of India's total imports during that time, gold was only around 10%. A global oil price surge pushed the current account deficit up far more than gold did. So gold imports reflect economic insecurity, not economic weakness. While Indians were turning to gold because of high inflation and falling rupee, which made gold a safe hedge, not a cause of crisis. See, in other words, gold was the symptom and not the disease. It is not simply because of such time, but also the government slow reforms and high fiscal deficit also during that time comes into play, where the period was so worsened that the investment sentiment was bad, and so was the current account deficit, as you showed. When the macro fundamentals, which were improved after 2024, the gold demand stayed strong. But
what was more surprising is that the current account deficit came under control. This clearly proves that the gold wasn't the real villain. See, my last line would be that blaming gold for 2011 and 2023 current account deficit for the minus 5% GDP reason is like blaming a thermometer for a fever. It only reflects deeper economic issue, it does not cause them. Yeah, but I might agree I with your don't point, When the but time is you not are up, just hold on, Josefa. Just hold on. okay. Go ahead. Is your rebuttal over, Abhinav? no, I was speaking. Mhm. See that the trade deficit is also driven by forex, 4 times more by oil. As I mentioned also, India's current account deficit is just 0.6% of the GDP. So hoarding is when an asset sits aside, as you spoke. See, gold is actively used as collateral, recycled and monetized. It circulates throughout the financial system. Once we move forward in the debate, I will prove you that how it circulates in the financial system, throughout the financial system. Gold is productive where it 15 matters seconds the left. most. Gold is productive where it matters the most in households that cannot have access to formal credit. Yeah, I'm done with my rebuttal. Okay. Go ahead, sales team. So I would be reverting to your point, like as you said that as per your information that the oil was one of the major factors which created that figure, like, and was the major issues when the GDP goes minus 5% like, and as you also accepted that the gold was also a part of it. So if you know that our debate is basically about gold, we are not talking about any other elements, we are not talking about any other factors of the economy. We are just talking about the correlations between and the connections between the gold and the current account deficit. So as our figures which proved uh, properly, not diverting the audience, not distracting it with the other elements, we are not talking about the JDP over here, we are specifically talking about the gold and the current account deficit, how it impacts and how it further impacts the GDP. So my point is, as you accepted in your presentation that gold was also a part of it, so we presented that how much it impacted and what was the part of the same in that duration. So Javed, if you can present the graph again. Yeah, so in this graph it clearly shows that the ratio of how much we import in tons also, and what is the cost in the year 2022 and 2023. If you go back, Javed, to the other graph which gives the correlation between the current account deficit. Yeah, this graph. So this, come back. Yeah, this graph also shows the clear picture that how gold imports like coincide and how it happened in the year 2011 and 2013, 2011 and 2013, the financial year, and it is being repeated another time in the year 2020 and 2023. So this proves our point that it is been affecting a lot, as it is not being used basically for the it's not being used for the investment purpose, it's basically used for the consumption. The bangles which shines in our hands, it's basically giving a dent on the economy. So these are the points which we would like to prove. Javid, would you like to add on this? So Abhinav, as you said that the current account deficit, so data prove that current account deficit is nothing but the export minus import. So according to the data, Time about up. 800 tons of Time up. Javed, gold Time time is is up. up. imported. Okay, time Javed, up. time Time is up. up. So Josefa, you specifically took two instances, 2011 to 2013 and 2021 to 2023. Mhm. I understand where you guys are coming from, but taking specific two examples doesn't really prove that how the gold has been actually impacting the By the economy. way, the rebuttal time is over. Okay. We have 10 minutes for the audience.
Anybody on the audience that wants to comment can comment. If they are done with their comments, then the teams can again continue with their discussion. Yeah. So, Josefa, you said one thing that Mhm, gold is not used for investment. mhm. Okay, it is used for consumption. So, did Okay, I you didn't mean say like, that. Let me correct you. I didn't say that. I said 70% of the gold which is being imported is used for consumption, and rest only 30% is being used for investment. Yeah. Now so please you mean continue more with the it's used question. for consumption? That you Yeah. meant, correct? Yeah. Okay. Okay. Fine. Any other questions? Guys, if nobody in the audience is talking, the two teams can have a discussion on the topic. I mean, definitely the topic is a little more technical than some of our recent topics. So I'm sure the audience is busy digesting all the information you shared. So any elaboration you want to make on the points you made, please go ahead. Sir, I want to ask one thing कि अपने डजन डायमंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विच आई बिलीव इज लाइक सर्विंग द पीपल जो ट्रेड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करें और वो अपना इन्वेस्ट भी करें उसमें वो पैसा बनाए दैट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंपनी Definitely. राइट राइट सर Definitely. Yes. the price of the gold in year 2000 were 4400 per 10 gram and the nifty at that year was around 1500 so 25 years में gold is now like 120 above मतलब 30 times gold ने फायदा हुआ है जिसने उस टाइम गोल्ड लिया था और जिसने उस टाइम निफ्टी लिया था वो अभी नॉट इवन 20% 20 times I mean it's not even 30,000 right now so फर्स्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो द थिंग इज हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पे गोल्ड आके इट ब्लॉक्स द इकोनॉमी एंड ऑल दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक और इस पे काफी किया जा सकता है अभी हम दोनों तरफ के पॉइंट रखे जा सकते हैं कि फायदा है भी या नहीं है बिकॉज राइट नाउ इफ वी सी चाइना इज द मोस्ट लाइक लार्जेस्ट इंपोर्टर राइट नाउ उसने सबसे ज्यादा बाय किया है रिसेंट कपल ऑफ इयर्स में लास्ट सो वी कांट से मच इससे क्या हो सकता है इकोनॉमी में बिकॉज like the in the back days जब डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड था उन्होंने हटा दिया था there is a lot of things There's going on can't say there's a that difference though. There's a difference though, Kamal. Basically, it is one thing for a government to import gold, right? It is quite a different thing for the citizens to purchase the gold, right? Correct. Yeah, I'm getting your point, but we can't put so much burden on common people ना. We can't say that कि यार आप ये मत करो, आप वो करो. अभी अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि यार चलो आप ट्रेड कर रहे हो तो आप हमारी स्ट्रेसलेस स्ट्रेटजी से ट्रेड करो जिससे आपका डाउन भी जाएगा तो भी आपका फायदा होगा. दिस इज आवर मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. फिर हम उन्हें ऐसा Okay, डिक्टेट नहीं okay, कर okay, सकते okay. that So you have to I buy. think you started by talking about what is the primary objective of dozen diamonds, right? The primary objective of dozen diamonds is to benefit the country. Country comes first. प्रॉफिट होता रहेगा, लोगों को प्रॉफिट होता रहेगा, पैसे बनते रहेंगे. प्रॉब्लम ये है कि मतलब द फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम यू आर फुलफिल्ड इन लाइफ तो आप ये ऐसा सोच रहे हो वहां पे लेकिन जो लोग अभी हैं जो अपनी लाइफ में रेस कर रहे हैं वी कांट टेल देम कि यार कंट्री के लिए सोचो या सोचो वो आई एम श्योर अभी अगर अपने अपने टीम से पूछ लें द पीपल इन द टीम तो आई एम श्योर कि 90% की इवन नॉट इवन 1 लाख की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी स्टॉक मार्केट में बट उनका कहीं ना कहीं उन्होंने गोल्ड बाय किया होगा अभी तक. पहली बात कमल, यस सर. मैं अपनी टीम में सबसे गरीब आदमी होऊंगा, तुमको पता नहीं है, राइट? मेरा सारा पैसा डजन डायमंड में लग चुका है. अभी ये कंपनी सिर्फ मेरे दोस्तों की कृपा से चल रही है, राइट? मैं जर्नल बात कर रहा हूँ सर मतलब इसको हटा देते हैं चलो अपने किसी और राइट, अगर नॉर्मल बात कर लेते हैं 30-35 राइट. ईयर ओल्ड ओल्ड इंडियंस की बात कर लेते हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं नहीं तो तो उनको वही मेरा कहने का मतलब वही है ना कि अगर वही पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, उनका पैसा भी बनेगा और देश का भी भला होगा. जॉब्स क्रिएट होंगे तो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी. उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे,
राइट। अभी सीधी सी बात है ना, बेस्ट इकोनॉमी कौन सी है अपनी सामने? यूएस की इकोनॉमी है। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज 0.5% ऑफ देयर टोटल वेल्थ। हमारा कितना है? 20%। उसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, 20% वर्सेज 0.5%। सर एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ मैं भी। एक इंडिविजुअल को बेनिफिट किस में ज्यादा है, मतलब हो उसके पास जो चॉइस है वो ऑब्वियसली वो कर सकता है, कुछ उसमें इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में, नहीं कुछ ये ओके, गाइड कर मैं सकता है मेरा अपने। पॉइंट ये है कि इट्स ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम्म, अगर तुम गोल्ड खरीदोगे, ऑफ कोर्स हाँ, गोल्ड का दाम बढ़ेगा, राइट। हम्म। अगर तुम उस पैसे को मार्केट में लगाओगे तो मार्केट बढ़ेगी, राइट। दीज थिंग, अगर हमारा 20% हमारा वेल्थ गोल्ड में अटका हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, गोल्ड पे भी पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। अगर वही पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्टेड होता, 20% का आधा भी, 10% भी मार्केट में इन्वेस्टेड होता, तो आज हमारे मार्केट की वैल्यू $8 ट्रिलियन होती। $2.5 ट्रिलियन से अगर मार्केट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो उसका देश पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। देश पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इतना रोते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इशू है, वो इशू है, गरीबी है। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते, और क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा पैसा अटका हुआ है। ये सर ये चक्कर। मतलब एक कॉमन पर्सन को अपने ये बर्डन नहीं दे सकते ना, अगर हम एक लार्ज बर्डन हम स्टेज किसी को दे ही बात नहीं करें। रहे। हम अगर बर्डन दे, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करके तुम्हारा ज्यादा पैसा बनेगा या कम। ये तुम्हारा परसेप्शन है। ये तुम्हारा परसेप्शन है कि मेरे को गोल्ड में जा डाल के ज्यादा सेफ्टी मिलेगा, या ये मिलेगा या वो मिलेगा। वही पैसा अगर मार्केट में लगा रहता, कोई बर्डन नहीं है उसमें, उसका ज्यादा पैसा बनता। उसका ज्यादा पैसा बनता, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता। हम ये बोल ही नहीं। हम तो एक तरह से अभी भी स्लेव बने हुए हैं गोल्ड को। गोल्ड में अपना पैसा अटका के देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड, राइट। सर अपने 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 साइकी देखो सर, मार्केट की लास्ट 15-20 ईयर से, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये डिप्रेशन वाला एरा आ गया, 2008 कोरोना, एंड बीच में उसके कुछ, और अभी यूक्रेन वाला वॉर, और इतने सारे अनइवन इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और नहीं, ये उस तो पूरी दुनिया में होता है ना। ये तो सिर्फ वो, हमें तो नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी लेकिन दुनिया वो तो सिर्फ सक्सेस आधा है। परसेंट गोल्ड लेके बैठी हुई है। वो तो लेकिन गोल्ड के पीछे नहीं भाग रहे ना, हम ही भागे जा रहे हैं। कुछ तो होगा ना डिफरेंस, कि वो नहीं भाग रहे, हम भाग रहे हैं। वो अपने कल्चर में है सर, वो चीज तो अपने वही मैं सेफ्टी वही हमारा इस डीप डिबेट रूटेड का है, पॉइंट ही DNA यही में है। कल्चर में भी नहीं, ट्रेडिशन में है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड ट्रेडिशन। है, ये ट्रेडिशन में हमारा है सर। ट्रेडिशन बन गया है कि हमको गोल्ड में कुछ तो इमोशनल कनेक्शन है हमारा, चाहे शादी हो, चाहे जो भी है। एक इंडिविजुअल के सेक्रीफाइस। पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो सर, अगर एक इंडिविजुअल है, अगर हम्म। उसने लाइफ में उसने अपना गोल्ड बना लिया, ठीक है, और उसके मान लो, तो हम उसको फिर भी अच्छा ही बोलेंगे ना, उसकी लाइफ के हिसाब से तो उसने अच्छा किया ना, अपने लिए पहला अच्छा करेगा, खुद के लिए बंदा अच्छा कर पाएगा जैसे, तो धीरे धीरे करके वो कर नहीं, पाएंगे उसको। वही तो वही तो अगर हम पॉइंट है स्टार्टिंग इस में कोई डिबेट बंदा का। कर रहा है, किसी को बोले यार भाई शादी में तू ऐसा कर, गोल्ड मत ले, शादी में ये ले ले, स्टॉक ले ले, ये ले मैं तो ले भाई। बोलूंगा शादी ही मत कर। ये शादी तो ही सही बोल रहे हैं आप। फालतूगिरी है, राइट। मेरा ये कहने का तो पॉइंट यह है कि देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो इन इंडिया दैट आर हैम्परिंग आवर ग्रोथ, राइट। देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज वी डू इन आवर एविडेंस। कल्चर। वो मैंने स्टार्ट किससे किया था, अभी गोल्ड का प्राइस 2000 में इट वाज 4400 अराउंड, एंड निफ्टी वाज 1500। मैंने निफ्टी पे लगा दिए 1000 रुपए, तो मेरे मेरे अभी तक उसके 20 टाइम्स भी नहीं हुए, मैंने गोल्ड पे लगाए मेरे 30 टाइम्स हो गए। तो मैं क्यों बोलूं यार एक आम आदमी को, क्योंकि लास्ट 25 ईयर का डाटा ही है, उससे भी पहले देख लेंगे तो डाटा तो गोल्ड ही जीत रहा है ना। नहीं नहीं, देखो, कैंट से मैं दैट। वही, चलो यही नंबर मैं दूसरी तरह से तुमको समझाता हूँ, जी राइट। अगर हमने ठीक से गो मार्केट में पैसा लगा होता, तो आज मार्केट का वैल्यू डबल होता जो आज का वैल्यू है। सर, एक अब तुम एक एक और डबल कर पॉइंट लो। रखता हूँ, एक और पॉइंट रखता हूँ मैं कि अपने इतना यू नो ये कहने में अच्छा लगता है, नए नए आईपीओ आते हैं आते हैं, लेकिन लास्ट के अभी इतनी बड़ी कंपनी है, लेंस कार्ट का, जोमेटो का, और ये सब जो आ रहे हैं नए नए, नायका वगैरह, कहाँ चल रहे हैं सर ये मार्केट में? आप खुद देखो, ये कहीं ना कहीं तो वहां पे भी तो करप्शन है नहीं, ना, ये उस तो वो तो भी मार्केट का हमें करना बिहेवियर चाहिए। है। मार्केट का ये बिहेवियर तो नहीं है सर, मार्केट इसका का प्रभाव है। बिहेवियर है, कुछ ऊपर जाता है, कुछ नीचे आता है। नहीं नहीं हर सर, ये मार्केट में बिहेवियर नहीं आपको है, कुछ स्टॉक्स दिखेंगे जो डाउन जाए। अच्छा चलो दूसरी तरीके से समझते हैं। ये आप बिहेवियर नहीं काम है करते हैं सर, ना, ये आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस करते हैं सर। ना।
काम करते तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं ना, यस सर। वो प्रोड्यूस करते हैं वो इकोनॉमी में ऐड होता है। ट्रू सर। तो अगर मैं ये बोलूँ मैं काम मेरे पास 100 रुपए का है, लेकिन मैं अपनी बुक्स को मैनिपुलेट करके दिखा दूं यार 5,000 रुपए का काम है, मेरे ये शेयर तो खरीद लो। आप मतलब ये कोई और ही डिस्कशन हो रहा है फिर ये सर। चल रहा है, मतलब नहीं, वो आप चीज। आप हर बात में नेगेटिव सोचेंगे कि भैया मैं तो इतना करप्शन हो रहा है, इतना ये हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, ये हो रहा है वो। एक पॉजिटिव पॉइंट भी है स्टॉक मार्केट का, इट्स ए पॉजिटिव मैं बिजनेस प्रोसेस, अपने राइट। मैंने आपको मेन चलो, तीन अपने चार 10 मिनट हो गए सर, अपने 10 मिनट हो गए, अपन करते रहेंगे डिबेट, ओके, अपना तो बाद में चलता करते हैं रहेगा। कंटिन्यू। चलो, इनको मौका देते हैं, इनको आगे बढ़ने देते हैं, ओके चलो। ओके ओके। गो अहेड गाइस, अपन आएंगे ना 15 मिनट अपन बाद करते फिर हैं, से हाँ, बाद वापस में आएंगे, राइट। करते हैं। आ जाओ गाइस, सेकंड क्वेश्चन। Okay, sir. Thank you. My screen is visible. हाँ हाँ, Yes, पढ़ो। yes. Okay. So our first, second question is, how does gold import influence inflation and foreign exchange reserve in India? So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो गोल्ड का इंपोर्ट होता है उसका इन्फ्लेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है उस पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिलेशन देखते हैं कि किस तरीके से गोल्ड का रिलेशन किस तरीके से इन्फ्लेशन पे होता है और फॉरेक्स रिजर्व पे होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें गोल्ड का वेटेज लेस देन 1% है, मतलब एकदम निग्लिजिबल है। तो डायरेक्टली ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है गोल्ड का इम्पैक्ट सामने ज्यादा होने से, ठीक है। दूसरी चीज, जो गोल्ड की प्राइस की मूवमेंट है उसका भी जो इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो गोल्ड है वो नॉन कंज्यूमेबल एसेट है, ठीक है। जिसको एक बार मैंने गोल्ड खरीद लिया तो मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। वो इकोनॉमी में फ्लोट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं 22-24 के इन्फ्लेशन स्पाइक की, जहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो सीपीआई है वो कांस्टेंट रहा है। तो ये सीधा सा बताता है कि जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो डायरेक्टली सीपीआई इन्फ्लेशन के साथ किसी भी तरह का कोई लिंक शेयर नहीं होता है, मतलब होता है बट बहुत माइन्यूटली होता है। जैसे आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है 24-25 की, जिसमें जो गोल्ड है वो हम क्यों, मतलब जो हाउस होल्ड्स है वो क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली उसको एक डाइवर्सिफाई करने के लिए, इन्वेस्टमेंट आपका डाइवर्सिफाई करने के लिए। उसके बाद जो डॉलर्स आपने जो डॉलर्स में आपकी पोजीशन हुई है उसको हेज करने के लिए, और साथ ही में जैसे एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, इमरजेंसी फंड की तरह गोल्ड को यूज किया जाता है। आज भी रूरल एरिया में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे गोल्ड को एज एन मतलब हर घर में आपको गोल्ड मिलेगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेंगी, प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी, लेकिन गोल्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसी कोई क्राइसिस आते हैं फैमिली में, तो घर की औरतें सबसे पहले देखती है कि मैं गहना कहाँ पे गिरवी रखूं और वहां से कैसे पैसे लो, ठीक है। तो एज गोल्ड जो है वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप ये डेटा अगर देखते हो, यहाँ पे डेटा में आपको दिखाई दे रहा है कि गोल्ड का इंपोर्ट ईयर ऑन ईयर, और साथ ही में सीपीआई इन्फ्लेशन रेट और फॉरेक्स रिजर्व। तो जैसे 19-20 में अगर आप देखोगे तो 28 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन 4.8 था और फॉरेक्स रिजर्व 47,477। ओके, सो ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग जैसे गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है, अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन देखोगे तो बहुत बार इनवर्सली उसने एक्ट किया है, ठीक है। जैसे मैं ये ग्राफ से अगर बताना चाहूंगा, सो दिस ग्राफ शोज की आरबीआई की जो आरबीआई के ट्रेजरी में कितना गोल्ड उसने भरा है। तो नियरली 2022 से लेके 24 के बीच में 120 टन से भी ज्यादा गोल्ड आरबीआई ने अपनी तिजोरी में भरा है। अगर गोल्ड ये इन्फ्लेशन अगर स्पाइक करता या फिर फॉरेक्स रिजर्व को अगर हार्म करता, तो क्यों आरबीआई खुद गोल्ड भरती अपनी तिजोरी में, सबसे पहली चीज, ठीक है। अगर आप डेटा को देखोगे तो 19 से लेके 23 तक इस तरीके से यहाँ पे आपको गोल्ड होल्डिंग्स दिखाई गई है और उसकी वैल्यूएशन उस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप सस्टेंशियली देखोगे तो हर बार हर साल साल ब साल जो आरबीआई है वो अपना तिजोरी में गोल्ड भर रही है, ठीक है। उसके बाद दिस ग्राफ शोज, जैसे सबसे पहले गोल्ड जो है वो एक शील्ड की तरह काम करता है इन्फ्लेशन के और करेंसी रिस्क के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आरबीआई कह रहा है। जो उसकी रिपोर्ट आई थी 24-25 की, उसमें उसने खुद कहा है कि गोल्ड रिजर्व एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी रेट, ठीक है। अब ये ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जो ब्लू लाइन है वो गोल्ड का इंपोर्ट इंडिकेट कर रही है, एंड द रेड लाइन इंडिकेट द सीपीआई इन्फ्लेशन। तो जैसे अगर आप देखोगे तो कोविड-19 के ईयर में, मतलब 1920 में, जो गोल्ड का इंपुट है वो बढ़ा सब्सटेंशियली, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो बढ़ा। बट इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड का इन्फ्लेशन सडनली बढ़ते जा रहा है, बट जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि डायरेक्ट कुछ मतलब जो डायरेक्ट कोरिलेशन है
कि गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। उसके बाद आप देखोगे ग्राफ पे, जैसे 22-23 में जो गोल्ड इंपोर्ट है वो कम हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 5.3 से 5.4 हुआ है। अगेंस्ट जो 23-24 से लेके, मतलब 23-24 में जो हमारा गोल्ड इंपोर्ट था वो 45.5 बिलियंस का था, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो वहाँ पे 5.1% का है, मतलब डिक्लाइन आया है। सो दिस शोज कि जो गोल्ड है वो डायरेक्टली जो रिलेशन है इसके साथ, सीपीआई इन्फ्लेशन के साथ, वो नहीं करता है, ठीक है। देन अगेन कि फॉरेक्स रिजर्व, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे सीधा सा बता दूं कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब बाहर से पैसा आता है, जैसे एफडीआई एफपीआई की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स जब पैसा डालते हैं, तब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलेशन रिलेशन किस तरीके से होता है, जैसे गोल्ड इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमें पैसा डॉलर में देना पड़ेगा, और डॉलर हमें अपनी तिजोरी से जो फॉरेक्स रिजर्व है हमें वहां से देना पड़ेगा, तो शार्प डिक्लाइन होगा फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, ठीक है। गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने के बाद अगर गोल्ड इंपोर्ट कम होता है तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस टाइम अप। इंडिकेट। ठीक है। अच्छा guys, just remember, I don't know where the point got lost, but I'm not seeing too much references to the research that you are presenting. Judges, please take note of that. People that are presenting the references should be given some credit for that aspect. So, Sir, we have references at the end of any question. as soon as you present your data, you should be showing references. And I have talked about this earlier. Nobody is going to watch the video halfway through and then go and look at your references halfway through. They need to see your references at the time you're making your point. Okay? Okay, sir. Chalo. Start karo. My screen is visible, sir? Yes. Yeah. So the next question is, go to the next question. Yeah, impact of gold import. Yeah, impact of the gold on inflation and the foreign exchange reserves in India. So let us start with a simple question, that what really happens when India imports too much of gold? Every time we buy gold from abroad, we are paying in US dollars. This means our dollar flow out of the country. As dollar leaves, rupees weakens, and a weaker rupee means everything we import like oil, gas, electronics became more expensive. This directly push up inflation and force the Reserve Bank to use foreign exchange reserves to stabilize the rupee. So gold import doesn't just impact jewelry shops; they impact every single household in India. When the gold import rises, the price rise, and our national saving falls. So in the as we see that the India is the second largest importer of the gold in the world. Most of the gold is used for the to produce here is brought from the other countries. Go to the next slide, please. So India gold imposed over time this graph, which has been clearly showing that how much we import. So look at the chart. It shows that India gold imports from 2011 to 2024. Notice how number stay high, often crossing 50 billion. This proves that our deep dependency on imported golds. Uh, if we our obsessions with the gold is not just emotional; it is economical lack. The more we chase gold, the more we lose growth. So go to the next slide. This is the chart which is from the research of which shows that the gold import versus the current account deficit. Again, it shows clearly that the double line chart shows the link between the gold imports and the current account deficit, the difference between what we earn and from exports and what we spend. The same example which I gave in the previous slide about the year 2011 and the year 2020, 22 and 2023. uh, we have been crossing 53 billions of US dollars just by purchasing gold every year approximately by importing gold. Go to the next slide. This flowchart clearly explains us that when the gold import increase, more US dollars flows out, the rupees loses the value, and the imported goods became more costlier when we expense more. So this ultimately increases the inflation. Okay, so it is a domino effect.
one action triggers another. So if you see in the November 2024, India trade deficit hit a record of 337.8 billion USD, largely because of the gold imports. The rupees fell and the inflation expectation went up immediately. Go to the next slide. This pie chart. This pie chart is basically the RBI reserve compensation. So now we look at the pie chart showing that the Indian foreign exchange reserve as of October 2025. So if you see over here, the 85% of our resources are held in the foreign currency, and only 15% is the gold. The foreign exchange currency serves our national safety net. This helps us to pay imports, handle gold stocks, and maintain rupee stability. But when the gold import rises, the RBI often sell dollars for these reserves and support the rupees, and this means our safety net gets thinner. Higher gold imports makes the India more vulnerable during the global crisis and weaken our financial security. Gold makes our wallet glitters, but our reserve shinier. Go to the next slide. It's not affecting like an individual, it's affecting an all. If you imagine, like if we earn 1 lakh and we spend 1.2 lakhs, so you would start using that your saving, right? So that exactly what happens when India imports too much of gold from the from the foreign currency. Savings go down, and when the rupee is weakened, everything we buy from abroad like oil, fuel, food, phones becomes expensive. That expensive is basically inflation. In short, the gold import makes our economy weaker and our daily life costlier. The gold make one person richer, it feels, but makes the entire nation poor in reality. Time up. Thank you. Yeah. All right, Yeah. rebuttal, Yeah. instructor team. Yeah. Yeah. So my first point is that you have completely misunderstood the entire question. The question was not at all about how much the current account deficit is being impacted. It was clearly about how it influences the inflation and also the foreign exchange reserve. Coming back to the things which you said that gold doesn't, that gold fails at national savings falls because of gold, and India is the second largest importer of gold. And the obsession with gold is not emotional but economical lack. See, gold doesn't destroy savings, it stores them. Firstly, household savings in gold are a part of total wealth, not a loss to the nation. Second point is that it's only counted as unproductive in the air quotes, but because it's not captured in formal systems, but it's still saving. It is not at all spending. In fact, the rural India uses gold as collateral for loans, which directly supports small businesses and agricultural credit. Right. So calling gold a drain on savings is like calling a fixed deposit a waste just because you cannot spend it instantly. Next point is that the gold, jewelry, refinery, and export industries employ millions of people, especially women in rural areas and artisans in small to medium enterprises. Next thing is that what the data which you showed, which was where it was showing that gold holdings was only 15% of the total, what was it, RBI composition, if I'm not wrong, right? So that clearly proves that how gold has been a very small trajectory to the entire economy. And apart from that, gold imports aren't dead money. They are raw material for one of the India's biggest export sectors. Next thing you said that whenever India has to pay for its exports or for the imports, they use the foreign exchange reserve. So somewhere the gold tries to the price appreciation in the gold tries to help the foreign reserve exchange to whenever India has to pay uh, to the other nation. So the so-called obsession with gold is actually economic rationality, not at all ignorance. Indians prefer gold because it has consistently protected value against inflation in every case study and at every scenario. Rupee depreciation and weak financial literacy. I completely agree that people of India are not yet financially literate and they do not know how the gold has been obstructing their financial literacy or their financial gains. But here the topic is the Indian economy suffering because of gold? The topic is not that the stock market or the financial market is suffering because of gold.
Next point, for decades, inflation adjusted returns on bank deposits were nearly zero or negative. Gold gave these illiterate people some better stability in their life. When the financial system becomes more inclusive and trustworthy, savings will naturally shift from gold to financial assets. This is what I personally believe. And I feel that Hello, we are going to see that. time up, guys. So as you said that in our report, like I presented my point in such a way that when we are importing more gold, ultimately the foreign exchange are being used, and when the foreign exchange are being used, the rupees values is being decreasing, and when the rupees value is getting decreased, so ultimately what we are left over with the foreign reserve and we need to do other international trades. So I gave the example like if we buy oil, which comes up at a higher value, that ultimately increases the inflation in the country. If we purchase at a higher cost, obviously the country would not be selling it as a loss, right? They're gonna sell it more higher towards the consumers of the country. So that was our point. If you say that they are just saving as a reserves to their houses, I also agree to that point. It might be a very good investment for them, but not for the country. They are doing it for themselves, but at the larger picture, if you say the more they do it, the more we need to import it, the more we need to import. As in the pie chart, can you present the screen, Javed, please? In the flow chart, I explained in a very simple way that how it works, and the same you also has explained in your presentation that go back in your presentation when we purchase more, go back in this diagram. You also flow chart. Next slide, please. You also explained the same thing. If we import more gold, we need to expense more USD outflow, which ultimately weakens the rupees. You also gave the same explanation in your presentation that the dollar outflow is being done because we are importing gold. So whole point of the question is that the relation, like how it's affecting an inflation when we are importing more gold. So that we have proved that when we do more import, it will automatically USD will go out. The more USD go out, the value of the rupee will go lower. As the value goes lower, the inflation increases. The other things which we buy comes at a higher cost, which we should not. So if we reduce the import, ultimately whole structure will get reduced, and ultimately we would be getting things at a cheaper price from the other countries, and the consumer will also be able to get it at a lower price. That's the whole point of the question, and that's the whole point of our presentation was. Go to the next slide, please. 10 seconds left. Yeah, done, sir. Thank you so much. Yeah. All right. So that So, should have ended. We Josefa, get no 10 minutes. Yeah, go ahead. Josefa, whatever you said, I agree with that. Okay, that once you import gold, you have to pay in dollars, and then the rupee value drops. Okay, but I do not see any data, like any official data which shows, like for example, in the instructor team, like Abhinav's team, okay, who was editing, they showed a graph. Okay, there's no much impact on the CPI inflation. There's no much impact on the inflation when we import gold. Okay, it was directly shown. A graph was shown. So what was the CPI index and what was the gold import? But you did not show any official data saying that when we imported gold, the rupee depreciated so much at that point in time. So do you all have any data as such? As such, we don't have the specific data like how much difference is there at present, but I'm sure if we do a more research, if we might have done it, we might have come up with positive numbers. But the data which I showed in the RBI composition, if you might have observed that Hmm. the gold holdings we have, it's only 14.6% in the our reserves. Okay, so if they said that gold is playing a crucial role, it's only 1%, and it's been impacting a lot in the foreign exchange or the foreign trade, but that's not the reality. We are spending our foreign exchange, which is 85.4%,
It's not the gold who is major impacting. It's the foreign exchange, the USD, which is being sent while doing the international trades with the other countries. While importing things, we are outflowing our US dollars, which is weakening and thinning our economic. In near future, if for the God's sake it should not happen, but economic crisis comes up, we will be not able to handle it. So Just you mean to because say because the importing gold has nothing to do, it is the total importing culture which is the real villain. no, not the ultimate importing culture. We are, as the question, if you see, now the question was basically about importing gold affects the inflation, right? So we are trying to explain that if we reduce the importing, we are not producing that much of gold, right? But still we are buying that, and we also showed in the next previous question that why we are buying it, what's the ratio, what we are doing it with, right? So basically we are buying it as 70% of the population of the country is just buying it, wearing it, and keeping it for their investment. But if you see economically, it's not good for the country, right? It's 50 billion we are spending every year just to purchase gold. If you see our graph, we have explained that India gold imports over time. So if you see in the year 2011 to 12, it crossed even 50 billion, right? And it is approximately over 50 billion till the year 2024. So we are spending that much on gold. If we reduce that, if we save it, it will be more beneficial for the other aspects of the economy, and ultimately the inflation would be reduced because that money would be used in other aspects, right? What A is the billion. India's GDP? What is India's GDP? India's GDP for now, Yeah, it's 4.2 4.1 trillion. 4.2 4.2. trillion. Yeah. As Yeah, Huzaifa near said about that 4 trillion. yeah, India is spending 50 to 60 billion dollars per year, hmm right? If importing gold. That is just 1.3% of the total GDP. Yeah, but hmm that is not the question. Nah? The question is if we had about used that inflation. $50 billion to import resources that we can use for producing new products that we can sell for another $200 billion. Think about that. No, Instead of I'm spending $50 billion on yeah. importing gold, if we had imported some resources we can then convert in through our manufacturing into good products and sell it outside for $200 billion, that would be Ex- $150 billion gain in our GDP. Exactly. Completely agree. I completely agree with you. That is the exact reason why we are importing 50 to 60 billion dollars of gold per year, right? The Yeah, entire gold market, gold loan market in India, which have major players like Manappuram Finance and Muthoot Finance, which offer gold loans at very lucrative rates. The entire market is about 15 lakh crore. But what is the point of that? I am No, saying if you the import that logic which gold, you if you import that gold, right, and you make electronic circuits, you make gold-based cars, you do something with that gold rather than just storing it in your reserves and making ornaments out of it. Even if you made ornaments and the value of the gold increased because you made ornaments, I would understand. But the reality is that you hardly get any benefit by making ornaments out of gold. If no, you the are converting only it into some increase in the production of the country, in the GDP of the country, I would understand. But when we buy resources, when we buy oil, right? We use that oil, we consume that oil. yeah, yeah, We agree. don't store that oil, right? So the government clearly knows that the how much gold affects and how much gold importance has on our culture. That is the only reason why they are importing. The Other government reason is does the they one have? who is coming out with new policies every time to get people to move people away from gold. They came up with sovereign gold bonds. They came up with all kinds of policies. They are continuously trying to figure out. The government realizes that the reason Indians are fixated with gold is the reason why our economy is not progressing. The government is the first one to realize that. So if the government has realized that, why it has been importing gold for so many years? Government has been importing. The government is not importing the kind of consumption that gold has in India. 24,000 tons of gold is held by Indian women, right? 28, yeah, yeah.
That is not, that is the amount of gold that the government consumes or uses is very small. It is primarily using it for transaction purposes, right? Compared to that, we are fixed. The debate is hardly about importing. The Yeah, reality is, this exactly. debate is hardly about importing. It is primarily focused more on the amount of gold we own and how much we are draining our the cash flow in the country by storing it in the form of gold. Import is only a part of the story. The part that we have stored so much of our wealth in gold is a bigger piece of the whole story. Nahin? What do you think? Yeah, and one more point, like one my submission was, Josefa, one uh, more point is like that 70% of the gold, like if what we are importing, 70% of the gold is using for jewelry. Like correct, on the last year, 2024, 560 tons of gold were converted into jewelry just to correct. keep it in the locker or in the safe or wearing it. Yeah, I mean, and imagine for a moment. Again, I think I'm repeating my point again and again. But just imagine $50 billion. You use it to import something useful, and you convert it into a product and you sell it outside, right? You can easily gain at least 5 to 6 times more wealth by converting it into something useful. Agree or disagree, Abhinav? What do you think? No, I totally agree. My job is here to just to present the data and the logic which I have come up with. Sure, sure. So the data I showed, which was 50 to 60 billion dollars per year, India is importing that. कमल Which सर, I आप have, बोलने वाले थे, आप अपना पॉइंट खत्म कीजिए ना, अब अपने पास टाइम है थोड़ा. पर मैं कुछ डेटा देख रहा था, गोल्ड रिजर्व टू जीडीपी रेशियो, तो उसमें आई डोंट नो, मतलब आपका पॉइंट सही है, अभी गोल्ड अपने इंपोर्ट करके कुछ मतलब उसका प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये अगर भाई बाकी कंट्रीज को बन देखें गया। जो अपने से आगे हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, द रेशियो इज 72%, किसका रेशो? द गोल्ड रिजर्व रेशियो टू देयर जीडीपी, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता सर. दे हैव Total 8000. gold owned by the households there is 0.5% of the net wealth of the country. The gold They are reserve not. ratio I'm talking about, the reserve currency, जैसे you've been saying that we should have more dollars instead of gold, but they have like 72% and India have like I mean नहीं नहीं, 9%. हम उस गोल्ड की, जो गवर्नमेंट गोल्ड होल्ड कर रही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे सर. जो रियल गोल्ड इंडिया में है वो हाउस होल्ड्स में है. दैट इज द गोल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. ये कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट्स गोल्ड होल्ड कर रही हैं, दैट इज हार्डली अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. जो हाउस होल्ड होल्ड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करने वाले गोल्ड से बहुत ज्यादा है. So जैसे एक पॉइंट आया था अभी, somebody said the economy of gold loans and these मतलब type of मतलब जो है, तो उसमें भी तो चल रहा है ना सर, क्योंकि फ्लोट इस द पॉइंट इज, जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं, जो भी हमने इन्वेस्ट करके हैं, वो फ्लोट लिक्विडेट हो, हाईली लिक्विडेट है, कि हम जाएं आज भी गोल्ड को प्लेज करने, तो इट विल बी लाइक, अगर 10 लाख के शेयर है मेरे पास और 10 लाख का गोल्ड है, आई विल गेट 70%, 75% अप्रोक्सीमेटली फॉर द गोल्ड, एंड अगर मेरे शेयर प्लेज करने हैं, आई नॉट गेट लाइक 60% ऑफ इट. नहीं नहीं, आपको देता है ना, ब्रोकर देता है आपको. आपको ब्रोकर से जितना भी मार्जिन मिलता है आपके ट्रेड शेयर करने के पे. लिए देता है सर, अगर अपने को पैसे लेने हैं तो वो उसमें वैल्यू नहीं आएगी उतनी, और इंटरेस्ट रेट भी अगर Uh, गोल्ड का कम मिलेगा, अपने को कम देना पड़ेगा, एंड उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है शेयर प्लेज करके नहीं अगर. sir, सर, आपको sir, लोन जो even भी you दे can get रहा a है, loan जो भी against shares गोल्ड पे as लोन well. दे रहा है, उसमें आपको आपको रियलिटी यही है कि उसमें घाटा ही होता है. आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना गोल्ड का लोन लेने का, वही बहुत हाई है. but it is फाइव a टू टेन collateral परसेंट तो free आपका loan, no? ट्रांजैक्शन में ही चला जाता है. But in gold, it is a collateral free loan. In shares, we have to maintain the margin every time it goes below a certain level. Let's Collateral say, free, isn't gold itself the collateral? I mean, what do you mean by collateral free loan? yeah, exactly. My point is exactly I'm the same comparing gold. I'm comparing gold to with the shares stocks. pledging.
Yeah. स्टॉक प्लेजिंग, हाँ, अगर 10 लाख के स्टॉक्स हैं, वी विल नॉट गेट इवन 60% ऑफ भी। अगर कहीं पे जाएं और वी हैव टू उसके बदले में हमें लोन लेना है तो 60% भी नहीं मिलेगा, और उसका इंटरेस्ट रेट ओवर 10 to 11% से ऊपर होगा। गोल्ड का इंटरेस्ट रेट 8-9% पे हमें मिल जाएगा, और वो 75% भी वैल्यू दे देगा जिसकी है गोल्ड की। सो लाइक इट इज़ मोर लिक्विडेट। कुछ किया भी जा सकता है अगर गोल्ड में इन्वेस्टेड है बंदा, तो उसको प्लेज करके जो अमाउंट आ रही है उससे भी कुछ किया जा सकता है। नहीं, बट जहां वहां तो प्रिंसिपल से ही हो रहा है ना। स्टॉक्स का आप बोल रहे हैं कि भैया स्टॉक्स पे मेरे को लोन नहीं मिलेगा। आपका स्टॉक ही इतना बड़ा बेनिफिट है कंट्री को। गोल्ड तो गोल्ड है। आप जो वहां स्टॉक है, दैट इटसेल्फ, द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज वर्किंग फॉर यू। Forget एंड about the interest or the loan that you are getting. There, the principal itself is working for you. चलो अपन तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेम सेम विद द गोल्ड आल्सो सर, प्रिंसिपल आल्सो गेटिंग, मतलब नहीं ही नहीं, जा रहा गोल्ड क्या कर रहा है आपके लिए? सर गोल्ड तो बैठा हुआ है तिजोरी में, वो क्या कर रहा है? है। वो थोड़ी ना जॉब्स क्रिएट कर रहा है। वैल्यू तो इंक्रीज, हाँ वो सर, वो फिर पॉइंट वहां पे तो मतलब तो फिर राइट। Yeah, and if you talk about like stocks, so stocks is something like चलो which चलो, is an अभी अभी asset लेट्स in मूव the टू द country. थर्ड क्वेश्चन, नहीं तो हम फ्लोट स्टॉक्स करते रह वी हैव, जाएंगे, अपना लाइक डिबेट स्लो हो जाएगा। हमारे पास हजारों स्टॉक्स हैं, वी हैव टू चूज वन जो बेस्ट परफॉर्म गाइस करेगा, तो वो तो गाइस, एक ही थर्ड है। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ओके सर। क्वेश्चन। ठीक है, चलो। Okay. So guys, the third Okay. question is, what role does gold play in Indian household savings, and how does it impact financial inclusion and access to credit? See, बढ़िया, for, एकदम परफेक्ट टॉपिक है, चलो। पॉइंट आ गया। for Indian households, gold is a foundational component of wealth, often prioritized over formal financial assets. This preference is driven by a combination of various things, let's say economic factors, cultural, all social factors. In the data which I'm going to show you completely shows that how much gold does Indian households have. That is approximately 28,000 tons of gold. This figure is obviously 3 times more held by the US government. This article completely proves that. And on the right side, you can see that how much gold the top countries are clearly holding. This 28,000 tons of gold is collected on the individual level. I completely agree. On the right side, it is collected on the country level, that is 846 tons. Now, if I take you to the second part of the question, which is how it is impacting the financial inclusion, the first part is that it is an alternative financial tool. Right. So for low or medium income households, rural population and individuals in the informal sector, gold often serves as their primary financial asset. The ability to use this asset to access services makes it a powerful alternative for the financial inclusion. Next is the gateway to formal credit for women. See, gold is particularly important for the financial inclusion of women. In many households, gold jewelry is also known as Dhan, is one of the few assets women have direct control over. The gold loan market has recognized this, as I mentioned in my point earlier. And for many women, especially in semi-urban and rural areas, a gold loan is their very first interaction with a formal financial institution. Next is bridging the unbanked into the system. Bringing gold loans are asset backed. They do not rely on credit histories. They do not rely on credit histories, income proof, or any kind of formal employment. We all know how untransparent the entire civil score system works in India. So for those individuals who do not have certain credit history which is required to take any loan, gold is the best way to take the loan. And somewhere it also creates a credit footprint with a formal lender, which opens the door to another other financial products in the future. Now the third part of the question, access to credit. We all know that how liquid gold loans are. Liquidity is the first and foremost thing which gold loan gives. But on the second part, we see that how easy and how ease and speed of access does the gold loans have. They have primary two advantages. First thing is that minimum documentation. Only basic identity and address proof are typically required. Next is the no credit checks. As I mentioned earlier, the loan is obviously secured by gold. So the borrower's credit or any kind of income level is not at all a barrier. Next is how gold has been used as many versatile uses for the Indian households. First is business and agriculture. We all know that how funding working capital for small and medium businesses is important. So many a times we have seen that how gold helps
those businesses take loan. Next is buying seeds or any kind of equipment for farmers. We all know how literate the farmers of our country are. The gold is only the language which they understand. So how this is exactly how the gold protects their entire family and their professional life. Next is the personal emergencies. These cover unexpected medical expenses or the family emergencies which we have in our family. And next is the planned expenses. Majority of the people I have met in my life have planned expenses like weddings, some education loan, or some kind of home renovation, or taking or planning to buy a home in the near future. They have certain amount of gold which they expect that it would go higher in the future, so that they can easily get loan against that. Next, as I mentioned earlier, that how NBFCs provide certain gold loans to without fulfilling less number of financial requirements, as gold loans provide an option for individuals to access credit facilities without the bare minimum Half a minute more. requirements. Yeah. So my simple point is that for poor and middle class, gold is the often first and only financial asset they own. It gives them agency, liquidity, and dignity in times of need. Far from being an economic burden, gold has become a bridge connecting India's traditional savings mindset to its modern credit economy. That's my time, guys. Thank you. TK sales team, go ahead. Yes, sir. I am present. My screen. My screen is visible? Not yet. Now. Yes, sir. So the question is the role of gold in Indian household saving and impact on financial inclusion and credit access. So ladies and gentlemen, in India, gold is not just a metal, it is emotion, security, and tradition meted together. For centuries, from the glittering ornament of queens to the simple bangles of farmer wives, gold has been the heartbeat of Indian saving. When bank did not exist, when inflation was just an rumor, and one trust lay not in proper money but in tangible shine. Indians trusted gold. Even today, in every wedding, every festival, every family emergency, gold silently guards our household like an old faithful friend. Gold may shine in our hand, but it weakens our economy. Our obsession with gold increases inflation, drains our foreign reserves, and puts pressure on the rupee. To protect the India economy stability, we must invest our saving in productive assets, not imported gold. India today told over 25,000 tons of gold worth nearly 150 lakh crore, the largest private gold holding in the world, as per the World Gold Council Report 2023. Every Indian household, rural or urban, rich or poor, treat gold as the safest form of saving, which is easy to store, inflation proof, and emotionally satisfying. But this golden love story has two sides. One side is that on one hand, it reflects our financial wisdom, our ability to save and protect ourselves where bank failed or inflation rises for millions in villages who don't have easy access to banker or credit card. Gold is their personal bank, their insurance policy, and their emergency fund. In fact, during crisis in COVID, there is 1.5 to 2 lakh crore in gold loan annually. There is, but the other side is darker side, which is our obsession with physical gold also looks up enormous wealth in vaults and cupboards, unproductive wealth that does not circulate in the economy. Instead of investing in bank, mutual fund or startup, Indians store their saving as gold, which contribute nothing in national growth. When households invest less in financial instruments, financial inclusion slows down. When India imports hundreds of tons of gold every year, our current account deficit widens, our rupee weakens, and economic stability is tested. So while gold gives emotional comfort, it also keeps people away from the digital financial revolution like saving account, UPI payments, credit card, insurance, and pensioner, which can say that gold makes people financially safe but not financially included. This is the graph showing that first graph is showing the gold price increases annual by annual. You can see that the graph shows it the price of gold increases annual by annual. Second graph shows the household saving composition in India. So there is the difference between there is two graphs. One graph is the financial saving, which is in green, and second graph is the physical saving. So you can see that the physical saving graph is
more as compared to financial physical savings like gold, which is going faster and faster. Another two graphs show the gold loan as share of total bank credit, which increase annual by annual. And second graph shows gold holding versus the financial inclusion index. So financial inclusion index, which is in green color, and second household gold holding index, which is in orange color. So gold holding versus the financial inclusion index 2010 to 2005 demonstrate an inverse relationship. As gold holding rise, financial inclusion improves only slightly, showing dependency on informal saving. This is the graph of current account deficit versus the gold import. So you can see that the red is the current account deficit and the yellow graph is the gold import, which is in US dollar. So the current account deficit is increased day by day, which is in negative, and your import of gold increases. So my other consequence is that how gold hampers financial inclusion. Financial inclusion means giving people access to bank account, credit, insurance, and digital payment. But when people save in gold, they often don't open bank account, don't invest in financial asset, and don't build a credit history. That means millions remain financially invisible. They cannot access loans without pledging gold. They can't benefit from government financial scheme, and they remain trapped in a cycle of informal, unrecorded saving. 15 Limited seconds credit. left. Yeah. So my final conclusion is that, friends, I'm not saying gold has a value, has no value. It surely does. But we must understand this truth. Gold makes people feel rich, not only empowered. In short, gold may sparkle in our homes, but it blinds our Time economy. up, time up, It may time up, symbolize wealth, but it slows our inclusion. time up. Yeah. Okay. Go ahead, instructor team, your rebuttal. Yeah. So many points covered by you, Javed. Some really good points where you talked about how gold puts pressure on the Indian rupee, how people put gold in their vault, and gold contribute nothing to the national growth. Excellent. Now my rebuttal is that rupee, the thing which you talked about, rupee pressure is just a short term effect. It is not a structural problem. If it was a huge problem that every time, then every time if you had a wedding in India, the rupee might crash significantly, but it doesn't happen, right? So next thing is that gold imports. You also talked about gold imports and the CAD. I'm coming to that aspect in the next 20 seconds. But talking about the rupee, that the rupee weakens when the global oil prices or the US dollar strength rises. These are far more bigger factors than just the gold. Gold import obviously can influence the rupee temporarily, as I mentioned earlier also, but it is not a permanent drag on the currency. When the CAD, which is the current account deficit, widened in 2023, as I said, RBI used the gold monetization schemes and gold bonds to balance it, and it worked. After that, the CAD fell, though gold demand remained higher. So my main point is that if gold was the reason for rupee weakness, then the rupee should have kept on falling every time. In India, we have this Akshay Tritiya. So every time Akshay Tritiya comes, the rupee should fall, as I gave the example of wedding also, but this time it didn't. Now coming back to CAD, which you said that how every time gold imports have emptied the current account deficit. See, current account deficit depends on overall trade balance. It is not just dependent on one commodity. The CAD doesn't widen because of gold alone. It's a result of, as you also mentioned, it is a result of total import minus the export gap. So in most of the years, again, touching the point that oil and electronic imports are far more major contributor than the CAD, the major contributors to the CAD than gold. If I have to give you an example, in 2023 to 22-23, India imported 158 billion worth of crude oil versus 35 billion in gold. That is almost 4 times. Yet all prices fall and export rise, CAD shrinks. But even when the gold demand remains steady, it is proof that the gold isn't the key driver. So the current account deficit is like a balance sheet, if you can understand. Blaming gold 30 alone is seconds like more. blaming gold alone is like blaming one expense for the entire company's loss. Yeah, thank you.
So as you say that as per the like NBFC, Muthoot Finance you mentioned, and also for financial inclusion. So my question is that you say gold promote financial inclusion, but how can asset locked in home lockers outside the banking system promote inclusion? Is it true financial inclusion about bringing people into the formal system, not encouraging them to stay outside? So on access to credit, you claim gold loan improves access to credit, but are not gold loan just a short-term emergency loan that don't build any credit history or financial literacy? So my question is that how the how is it how is it home lockers outside the banking system promote inclusion? I never said that the home lockers are offsetting the. But you say na ki like uh, short-term emergency loan that don't build any credit history. Means like you say na ki NBFC or Muthoot Finance ने इतना जमा किया है, इतना नहीं लोन नहीं नहीं, किया है. what I said is that they have constructed a billion dollar industry just on the basis of the gold loan, because they know how frequent and how big people take loan against gold. But this loan, but that is this is Muthoot Finance is a NBFC, right? Yeah. So So it is not a bank, it is unbanked system. So how Yeah, and unbanked also what system? one more difference thing. does it make? One more thing, like as you said that that people get loans against the gold. They may offer like short-term reliefs, but they don't solve the deeper issues. Farmer pledge their family jewelries and pay higher interest and risk losing something deeply emotional only to stay trapped in the same financial cycle. In reality, gold limits the people from being financially included. It keeps them away from the digital payments, credit systems, insurance, and the saving products that can actually improve their financial stability. So, No, no gold does no gold what does stable difficulty. instruments are you talking about? The bank FDs don't give anything to these farmers. The And other for a insurance, farmer, the other gold is insurance which not I gold. mentioned, other credit system. A farmer is not emotionally stick to its gold more than he is stick to his land. उसके लिए उसकी जमीन ही ज्यादा Yeah, that's what emotionally we are connected talking. होती And है. in The gold, presentation, the The gold reason is just no. you also said that the gold is basically as an investment, right? As an essential, as in culture, it's been bought, right? So they're emotionally connected with their jewelries, right? If you are pledging that jewelry of your, like, I'm not no, but who is like saying that the pointing out farmer is going to any pledge the mother. entire gold? He's only going to pledge the gold which of 1% which at the a worth time, of guys. 1% at a time. वो उतना ही प्लेस करेगा ना जिसको उसकी जरूरत है. एंड वो जावेद ने जो पूछा एनबीएफसी का, बैंक्स भी देती है गोल्ड एंड अच्छा एनबीएफसी चलो, और अपना टाइम खत्म हो गया रिबटल का. Monetization scheme का जो बोला आपने. गाइस, रिबटल का टाइम Time खत्म up, हो okay. गया. Let us give 10 minutes to the audience. The 10 minute, well-deserved minutes. They heard so much from you guys. They deserve their 10 minutes. ठीक है, audience. See, first thing I want to clarify one thing, right? We are talking a lot about loans. Let me tell you one thing up front. Nobody gives you a loan out of goodwill. Okay? The whole purpose of giving you a loan is to basically confiscate your assets. Correct, sir. yeah, My point. yeah, Right? I mean, yeah. nobody is giving you a loan because they love you. They are giving you the loan because they love the assets that you are putting on at stake. Whether it's your house, whether any collateral that whether the bank is giving you the loan, whether a gold shop is giving you the loan, they are mainly trying to confiscate your assets for cheap. That's all they're doing. So just keep that in mind. Loans are Yeah, not yeah, something exactly. great to access. So Yeah, exactly. My point was that how easy it is to access loan against gold rather than other conventional ways to get loan. That was my right, point. right. I completely agree to your point that the only reason or only motive for these NBFCs or bank have is to confiscate the whatever collateral we have. Right. Yeah, yeah. Nobody is, Yeah, they are also in the business. So yeah. yeah. So just a small point. Yeah. Because see, the other point I want to make is we are talking about, creating a billion-dollar industry out of loans, right? People have created bigger businesses out of alcohol and cigarettes.
What about that? Right? What my point is, just because you built a big industry out of a bad habit doesn't make the habit right. Yeah. Right? So just some points that came to my mind. आज ऑडियंस में कम बोल रहे हैं लोग, क्या बात है? बोलो यार, कुछ बताओ, तुमको क्या लग रहा है? अभिनव, एक क्वेश्चन है मेरा। आप पूछो ना। ये जो गोल्ड स्मगल होता है इंडिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसी पे है। अपना अपना सीक्वेंस ही चल रहा है। वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन बिफोर द एक्चुअल। चलो ठीक है, आप बता देना फिर। No, the question was also तो in the पूछो group ना, पूछो, group मेरा क्वेश्चन में। पूछो। साथ में एक और क्वेश्चन है, ठीक है? आप पूछो ना। कि जैसे जो लोग है अपना जो मनी है वो कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में, स्मगल गोल्ड में, ओके। ठीक है? और इंडिया में हर साल जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 15% स्मगल होता है। तो ये देश के लिए तो हानिकारक है क्योंकि वो जो अमाउंट ब्लॉक होता है, जो ब्लैक मनी है, वो तो फिर गोल्ड में ही रहेगा, वो तो कभी बाहर नहीं आएगा। उसके बारे में क्या कहना है? 15% दिखा सकते हो किधर है? हाँ, दिखा सकता हूँ ना मैं, तो मैं अभी गूगल किया था। हम्म, इन द मीन टाइम किसी और को कोई और पॉइंट रखना है तो रखो। 150 से 200 टन स्मगल होता है इंडिया में गोल्ड। हाँ हाँ हाँ, 150 से 200 टन। ठीक है फिर। तो ये सीज जो होता है 15 से 25%, तो उसके बारे सीज में होता क्या है, कहना है? सीज होता है कि स्मगल होता है? सीज भी होता है, बाकी तो शो नहीं होता है। नहीं नहीं, पूरा ये सिर्फ 15% सीज थोड़ी वाला ना है। अमाउंट है, ये सीज वाला अमाउंट है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि स्मगल होता हम्म है 150 से 200 टन पर ईयर। वो सिर्फ नहीं नहीं, ये सिर्फ सीज होता है जो बताया गया है, सिर्फ 15 से 20% वही है। तो क्वेश्चन किस पे है, स्मगलिंग पे है कि सीज पे है? दोनों पे है। देखो 15, अरे 15 क्या होता है, 150 से 200 टन गोल्ड एवरी ईयर में स्मगल होता है। ठीक है। अब तुम्हारे 15% के हिसाब से 30% ही, अरे 30 टन ऑफ गोल्ड ही पर ईयर सीज हुआ, बाकी का मार्केट में फ्लो कर रहा है ना? हाँ हाँ यही पूछ रहे हो ना कि बाकी का भाई 85% किधर गया? तो फॉल्स एक्टिविटीज तो हर एक उसमें होती है ना। इतने सारे ब्रोकर्स है, इतने सारे फास्ट सिस्टम्स है अपने पास स्टॉक मार्केट के, फिर भी डब्बा ट्रेडिंग तो चलता ही है। काफी स्टेट्स में कितना फेमस भी है डब्बा ट्रेडिंग। यस यस, कमल प्रीत जी बोलिए। अ, मैं ना एक पॉइंट सर्च कर रहा था, टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। जैसे सर बोल रहे थे भी अपने मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है। तो उस पर मैं कुछ सर्च कर रहा था, टॉप 10 कंपनीज इंडिया में, उसमें तो 4 तो बैंक ही हैं। चलो कीप द बैंक असाइड्स, क्योंकि इकोनॉमिकली जैसा भी ऊपर नीचे हो रहा हो बैंक तो स्टेबल रहते हैं, उनकी जो जॉब्स हैं वो भी स्टेबल रहती हैं। लेकिन उसके अलावा आई आई एम सीइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस, लेट्स से। तो मैं टायर 3 सिटी में रहता हूँ, इनके एक एक ऑफिस है हमारी सिटी में। टाटा कंसल्टेंसी का तो चल है ही नहीं, और इन्फोसिस का नहीं है, चलो मान लेते हैं इनके एक एक एवरेज मान लेते हैं, इनके एक एक ऑफिस है। लेकिन अभी एनबीएफसी की बात हुई थी जो गोल्ड लोन देती हैं और ये सब फास्ट लोन देती हैं इन सब चीज़ों पे, उनके लगभग लाइक 8 to 10 ऑफिसेज हैं। तो इकोनॉमी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो तो अच्छी बात है ना, वो एम्प्लॉयमेंट तो उनसे जनरेट ज़्यादा हो रही है जो गोल्ड लोन वाली एनबीएफसीज हैं। व्हाट डू थिंक सर? सर, टॉप 10 एम्प्लॉयर्स निकाल दो। आप सर्च ही कर रहे हो तो टॉप 10 टॉप कंपनी 10, निकालिए ना सर, अपने नहीं एवरेज। कंपनीज नहीं, टॉप 10 एम्प्लॉयर्स निकाल दो ना।
टॉप टेन टॉप 10 एम्प्लॉय एम्प्लॉइंग कंपनीज, कितने कितने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, किस किस कंपनी ने कितने कितने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, राइट। जॉब कहाँ मिल रहा है वो दूसरी बात है। अभी आप टीयर 3 की बात कर रहे हैं, आप वैसा क्यों देख रहे हैं? आप टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं ये देखिए ना। या दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। चलो हम अपने मान सकते हैं क्योंकि वो काफी सारी सर्विसेज हैं जो अपने सर्व कर रहे हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया और यू नो राइट। हो गया मेजरली ये आईटी कंपनी। आईटी कंपनीज हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी भी तो होनी चाहिए ना जॉब्स की। अगर मान लो कुछ इकोनॉमी बन रही है एक वही साइड पे मैं कह, देखो पॉइंट आप हमारा मेक कर रहे हैं, आपको जॉब सर, डाइवर्सिटी चाहिए ना, थोड़ा और पैसा डालो मार्केट में और जॉब डाइवर्सिटी भी आ तो जाएगी। ये बन भी रही है सर, ऑटोमेटिकली बन नहीं रही है। अगर ये इकोनॉमी में अब जो सर ने अभी बात की थी भी, बाहर से स्मगल होके भी आ रहा है, यहाँ गोल्ड स्टोर भी कर रखा है, तो ये एनबीसी जो ये चल रही है, तो इनके कारण भी तो हो ही रहा है ना। गोल्ड फ्लोट तो कर ही रहा है मार्केट में, चाहे वो गोल्ड के बदले में लोन आ गया तो वो भी तो इकोनॉमी का पार्टी हो गया ना। वो लोन तो कहीं ना कहीं लगाएगा बंदा। नहीं, आपको लगता है पूरी सर कंट्री पीपल आर गोल्ड के मोर लोन पे अवेयर नहीं अबाउट। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको लगता है पूरी कंट्री गोल्ड के लोन्स पे और गोल्ड के उस पे इकोनॉमी सरवाइव कर सकती है? हाँ? सरवाइव सर, अभी इन पे भी तो डिपेंड नहीं कर सकते ना। अभी जो अगर अपने बात कर रहे हैं अभी टैरिफ्स वगैरह की, और जो ये फ्लक्चुएशन है, अगर कल को कुछ ऐसा आ गया, यूएस ने कुछ बोल दिया अभी, चलो नहीं देते हम आपको सर्विसेज, देखो, फिर उसका at क्या the करेंगे? end of the day, the only reason India has any say in the world economy is because of the intellectual capital it generates. ट्रू, ट्रू ओनली Intellectual हमारे पास कोई। capital gets generated not by how much gold we are saving, but by cash flow that we are creating, by resources that we are producing, by talent that we are creating. स्किल बेस्ड Right? इकोनॉमी है, मतलब इन शॉर्ट में कह सकते हैं वी आर लाइक। अगर अभी एक मिनट के लिए ये सोचो कि अगर वो 20% जो गोल्ड में लगा हुआ है उसको हम अपना टैलेंट बिल्डिंग के लिए यूज करें, तो हमारा जीडीपी आराम से जो 5 ट्रिलियन है ना वो 20 ट्रिलियन हो सकता है। हम तो इट्स नॉट आराम नॉट से चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। चाइना सर, का इट्स क्या स्ट्रेंथ है? मैन्युफैक्चरिंग। हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्या है। स्ट्रेंथ है? टैलेंट। राइट। लेकिन सर ये मैन्युफैक्चरिंग करना भी इट्स मतलब एक वॉर चल रही है सर, ये देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग चल की रही है, अगर अपने कुछ डेफिनेटली चल रही है। वॉर है एक तरह की भी, वो अगर अपने करना भी चाहेंगे ना चाइना की जैसी मैन्युफैक्चरिंग, तो वो नहीं कर पाएंगे सर अभी। अगला डिबेट तो इसी पे है सर। अगला डिबेट मैन्युफैक्चरिंग पे है। देखो, आपने मांगा, हमने हाजिर किया, अगला डिबेट मैन्युफैक्चरिंग पे होगा सर। ठीक हम्म, है। उसका एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि हम प्लास्टिक की चेयर भी बनाते हैं ना सर, उसका दाना जो आता है प्लास्टिक जिससे वो क्रिएट किया जाता है, वो भी चाइना से मंगा रहा है इंडिया। इंडिया पे ऐसा कोई बदलेंगे ना? ऐसा है ही नहीं, रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा कुछ। देखो, हम सोचेंगे तो बदलेंगे, सोचेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे? तो इसका बर्डन सर मेरे को सिर्फ इतना है कि हम ये लोगों को ये बर्डन नहीं डाल सकते कि आप स्टॉक में लगाओ पैसा अपना। अपने लोगों को ये डजंट बर्डन हैव टू कौन डाल स्टेबल रहा भी है। है? बर्डन अभी अगर अगर चलो मैं आपके बर्डन की बात करता हूँ, ठीक है। घर में पैसा है, राइट, उससे हम टैलेंट बिल्ड करें या उसको सेव करके सोना बनाने में लगा, सोना बना के तिजोरी में बंद कर दें? आपका क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है? कौन सा ऑप्शन रियली बर्डन डाल रहा है फैमिली पे? सर देखा जाए तो बर्डन, सर ये तो एक कॉम्बिनेशन है ना, अपने को बैलेंस करना चाहिए। नहीं अगर नहीं, हम वही तो हंड्रेड हम परसेंट भी नहीं कह सकते बैलेंस कि ही यार बोल गोल्ड रहे हैं ना। बिल्कुल भी मत रखो। हम भी बोल रहे हैं 20% मत रखो, उसको 20 का आप 10% कर दो, तो ही देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ये जो 20% गोल्ड में अटका के रखा है, ये एक प्रॉब्लम है। और वो 20 का 10% भी कर दोगे ना तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये तो लोगों के अंदर ट्रस्ट फैक्टर भी तो होना चाहिए ना इकोनॉमिक पे। अब हमारा देश महान है, हमें प्यार है देश से, लेकिन अगर अब कोई बंदे को बोले यार कैलकुलेट करके बता बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो कहीं ना कहीं तो हेज देगा ही ना गोल्ड को, कहीं ना कहीं तो नहीं, करेगा भी यार वही ताकि मैं, इस पे लगाओ वही कुछ। पॉइंट आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि भाई तुम गोल्ड खरीद के सोच रहे हो कि गोल्ड आगे बढ़ रहा है। गोल्ड आगे नहीं बढ़ रहा है, आप उसमें पैसा डाल रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहा है। उसमें कुछ बढ़ने का है ही नहीं गोल्ड में, राइट। सर गोल्ड की तो एक्चुअली आप, ये क्वांटिटी से वो है ना सेम है, कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो इंक्रीज इवेंचुअली होता ही नहीं रहेगा जब तक नहीं, लाइफ आप चलेगी। अब चलो मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। आप वो कंट्रीज देखो
जो गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट कर रही, जो कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट। वहां जो डिफरेंस है उनके गोल्ड के प्राइस में और स्टॉक के ग्रोथ के प्राइस में, वो 3 to 4% है, अपना 2% है। अगर हम गोल्ड के बजाय स्टॉक मार्केट में, हमारा भी 3 to 6% का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो गोल्ड इसलिए नहीं बढ़ रहा कि वो गोल्ड में कुछ वैल्यू जनरेट हो रहा है, हम खरीद रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। अगर वही पैसा हम अगर स्टॉक मार्केट में लगाए तो स्टॉक मार्केट भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। मैं एक पर्सन इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू मैं से वही सोच रहा हूँ सी देखो, कुछ डिबेट प्रॉब्लम। करने का पर्पज ये है ना, टू चेंज द माइंड, राइट, टू फेस द रियलिटी। द रियलिटी इज एट अ ग्लोबल लेवल we are suffering, and not just us, other countries also realize how we are trapping ourselves. चलो अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाए। दोनों टीम्स काफी हार्ड ट्राई कर रही हैं। आई मीन आई रियली वांट टू टू थैंक द सेल्स टीम। They are fighting the best team that we have in this competition, and they are giving a good competition. I mean, of course, I would have liked to see the competition to be a little more close, but ठीक है, they are trying their best. They are doing pretty well. चलो लास्ट क्वेश्चन हो जाए। Yeah, मेरी screen visible है सर? हाँ, visible. Okay. So our next question is, are policies aimed at reducing gold import effective, or do they drive gold smuggling and black market activities? ठीक है। तो जो पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो गोल्ड इंपोर्ट को किस तरीके से जो गोल्ड इंपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करती है, और वो एक कारण हो सकता है स्मगलिंग के लिए, ब्लैक मार्केट एक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो हमारा देखिए, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी 2015 में, जिसको एसजीबी बोला जाता है, सोवियत गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ठीक है। इसके अंदर क्या, गवर्नमेंट एक बॉन्ड्स इशू करती थी। तो जैसे 2000 मार्च 21 2025 के अकॉर्डिंग 67 ट्रांचेस जो गोल्ड है, जो लगभग 146 टन है, जिसकी वैल्यू अभी 72,000 करोड़ रुपए की है, तो उन्होंने वो मोबाइलाइज किया है, जो फिजिकल गोल्ड मोबाइलाइज किया है। ठीक है। अब इसमें से 18 टन उन्होंने रिडीम भी किया है, जिन्होंने एसजीबी में ये किया था। ठीक है। अब जून 15 2025 के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जो गवर्नमेंट है, ये वाइटल, वो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अब एक न्यूज है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, कि जो जुलाई 2024 है उसमें, जैसे पहले गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी 15% की लगती थी, तो उन्होंने 6% की थी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो उसके वजह से जो स्मगलिंग है, वो स्टीप डिक्लाइन आया था स्मगलिंग के अंदर। ठीक है। तो ये कहा था जो चेयरमैन है सीबीआईसी के, डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल से। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था। इसके बाद जैसे लेटेस्ट डेटा है कि जो कस्टम है और डीआरआई ऑफिसर्स है, जिन्होंने 847 किलो गोल्ड उन्होंने सीज किया था, 544 करोड़ रुपए का, जो वेरियस एयरपोर्ट पे सीज किया गया था। तो ये बात है अप्रैल और जून पीरियड की, करंट फिजिकल ईयर की। ठीक है। तो जैसे जुलाई के अंदर जो कस्टम ड्यूटी रिलीज हुई थी, जो 15% से लेकर 6% तक, तो जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है, तो गवर्नमेंट ट्रैक करती है, जब भी वो कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करती है, तब तब देखा है कि जो गोल्ड की जो स्मगलिंग है वो कम हो जाती है। ठीक है। ये डेटा जो लिया गया है, मैंने ये इस रेफरेंस से लिया गया है, यू कैन चेक आउट दिस। ठीक है। अब कोरिलेशन देखते हैं कि इस तरीके से कोरिलेशन होता है। जैसे ड्यूटी जो 15% की होती है, ठीक है, मान लो कस्टम ड्यूटी पहले 15% की थी, तो जो स्मगलर्स होते थे, वो 15% मतलब उसके अंदर में जो बीच का पार्ट है, वो उनको बहुत ज्यादा ये होता था। ठीक है। अब जैसे उन्होंने ड्यूटीज कम कर दी, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे थे, लोगों को पता चल गया कि कस्टम ड्यूटी कम है, तो क्यों उसको स्मगल करना है। तो मैं किसी बाहर देश में घूमने गया, मैंने उसको लीगली लेके आया गोल्ड, उस पर 6% मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी पे की, वो गोल्ड मेरा हो गया। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लाई थी कट डाउन करने की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी कट डाउन करने की, तो वो उसके वजह से स्मगलिंग के जो केसेस है उसमें स्टीप डिक्लाइन है। ठीक है। जैसे नीचे है, बोला गया है कि जो इम्पोर्ट जो गोल्ड की कमी है वो कम हो गई है। ठीक है। ये उसका रेफरेंस है, सो यू कैन चेक आउट दिस रेफरेंस। अब किस तरीके से है वो इफेक्ट देता हूँ। ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी
तो two difference उसका बना नहीं कनेक्शन। अभिनव, तुमको टाइम यूज करना है क्या? हाँ, yes sir, obviously. So as the Vinay was talking about the correlation, as we can see that whenever the duties were higher, we have seen when it was 15%, the report showed that the gold industry and the government agency show a direct correlation when the duties were higher in the surge in smuggling. In the next page of the article, you can see that experts have said that the prevalence of gold smuggling is linked to the import duties and government policies and regulations. As import duties rise and the gold price increases, smuggling markets becomes more lucrative because the duties are high. Now, what's the effect? That whenever the duties are low, let's say currently it's 6%, whenever the Indian government cuts the import duty, it has a twofold effect. First is the disease gold, that the gold which gets smuggled gets easily, the smuggling activity reduces significantly, which makes a high risk activity less appealing. The next is how the official imports rose whenever more gold began to flow through legal and official channels. As it was no longer an expensive to do, this also increases the transparency and tax revenue for the government. In summary, while the goal of these policies is to reduce imports 15 and seconds more. Yeah. yeah, as while the goal of these policies is to reduce imports, their primary effect is to shift the import activity from legal taxable channels to illegal underground ones. Simple logic. Time up. Yeah, okay. My screen is visible? Yes, Yes, visible. Your clock is on. The question is, are policy aimed at reducing gold import effective or do they drive gold smuggling and black market activities? So when high duties are in place, increased smuggling, high import duties make smuggler gold more Can you profitable than maximize the size of the slides? You are not. Javed, click on present. Present. Beside present that, push. Just a minute. उसके बाजू में देखो ना, शेयर के बाजू में प्रेजेंट है, उस पर क्लिक करो. नहीं हो रहा है. अच्छा, अब दिख नहीं रहा हो है? रहा है तो चलते अब जाओ. दिख रहा है? अब दिख रहा है? सेम ही है. चलो जावेद, कंटिन्यू उसको करो, प्रेजेंट पे कंटिन्यू क्लिक करो. करो ऊपर, राइट एंड ऑफ द अरे स्क्रीन. वहां ना ये आ जा रहा है अपना टॉकिंग. जस्ट मिनट. Sorry. So when high duties are in place, increased smuggling, high import duties make smuggled gold more profitable than legally imported gold, which benefit the illegal trade. Slower reduction in gold demand, high duties can lead to a reduction in the overall volume of gold entering the market legally. But this does not necessarily reflect a decrease in overall demand, which can then be met by illegal sources. Loss of government revenue, smuggled gold circumvents custom duties, leading to lost revenue for the government and fueling an underground economy. So this is the data for World Gold Council Directorate of Revenue Intelligence report 2024. This is the year shows that in 2018, the import duty in percent 10% import duty, official import gold in tons 900 tons, estimated smuggling in tons that is 100 tons. In 2020, there is 12.5% import duty, official import gold 650 and smuggling gold 120 tons.
In 2023, 15% import duty, official import gold 610, and smuggling tons 160 tons. In 2000 current year, the import duty is 6% and official import is near about 580 and smuggling ton that is about 180 to 200 tons. So smuggling via airport borders nipple member increased 25% year on year. That show that huge amount of gold is smuggling year on year in 2024 as per the Director Revenue Intelligence Report 2024. Informal gold market now contribute to 20% of total demand. Loss in revenue and rise in illegal trade offset any benefit from reduced official import. Policies don't change demand, only shift supply chains. Black market gold leads to reduced transparency, tax evasion, funding for illegal activity, strain on law enforcement. Here's the graph for gold import duty versus the smuggling in India from 2015 to 2025. So you can show that the red graph shows the smuggling gold that is in tons and the blue graph shows the import duty, which is about, as you can see in 2024, the import duty is near about 15% and the amount of gold smuggled by 150 and above. So this clearly shows that the policies and import duty does not affect the smuggler. Alternative solution, reduce import duty to narrow the price gap, digital gold and ETF to shift savings from physical gold to financial literacy program to promote diversified saving. Conclusion is that policies aimed at reducing gold import are counterproductive. They suppress official trade but fuel illegal channels, reduce tax revenue, and encourage black market activities. A balanced approach reducing duties, incentivizing formal gold saving, and strengthening digital alternative is far more effective. Instead of reducing gold demand, high duty policies fuel illegal trade and weaken regulatory control. So my final conclusion is that this graph shows that as per year by year, the smuggle more amount of gold and the import duty does not affect on that. Thank you. Hello. Javid, you are audible. So this graph clearly shows that gold import duty Sorry, does time not up. I was affect. on mute. Time is up. Yeah. Okay. Thank you. Shall we start? Yeah. See, Javed, I completely agree with the figures which you showed. But you have to understand that smuggling is not a result of people's obsession. It is also a result of policy distortion. See, historically, we have seen that whenever the import duties were too high or unstable, smuggling rises as a way to bypass taxes. This is not just restricted to gold. It happens in our normal life also. If we have higher taxation on short-term capital gains, we have seen that how Dabba trading apps and betting apps have been so much popular. So people don't smuggle gold because they are obsessed. They smuggle because they always have one or the other way to find loopholes inside the policy. So smuggling exists in many commodities, not just in gold. So if smuggling is proof of economic harm, then even cigarettes are being, smuggled. Electronics are also being smuggled. Right. So smuggling is an enforcement problem. It is not at all a cultural or an economic problem. In fact, high demand of gold shows that there's a real market which if properly formalized can bring more tax revenue and employment. See, we don't fix smuggling by blaming gold. We fix it by building more smarter trade policy. See, India is already moving towards formal trade channels with digital gold and gold ETFs, which you talked about, and the SGB gold sovereign bonds. Demand is shifting from physical to financial from physical to financial gold. This reduces smuggling and also strengthens India's formal economy as well. So smuggling is falling not because we are giving up gold, but because we are learning how to manage it better. So smuggling doesn't prove India's economy suffers from gold.
it proves that our policy needs modernization, and the modernization is already been happening, and gold isn't a burden. Again, it's just an untapped economic opportunity. तो as I am showing you, मैंने जैसे ग्राफ बताया गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी वर्सेस स्मगलिंग इन इंडिया दैट फ्रॉम 2015 to 25. Just wait a second. My time is not up. I'm just going to show you some data. Just a second. If I have to talk about the comparison between the import gold and the smuggled gold, you can see there's the light blue curve line, normal line. It shows how much gold we have smuggled, and the bars show how much gold we have imported. So we can surely see that there's some or the other smuggling activity that has been going on, but you can see there's always a drop whenever we have seen few or the other policies which we have implemented whenever the duties were high. So as I showed you in the figures also, that whenever the duties were low, let's say today is 6%, we can see that the smuggling gold is been stable or quite low as compared to whenever the duties were high. So how many time left? Yeah. Pratik sir. Hello. I So mean, so 30. अभिनव Your time is up. Your time is up. Yeah. अभिनव जैसे आपने ग्राफ बताया, that's why I'm also sharing my screen. I show you a graph. This graph, that is gold import duty versus the smuggling in India from 2015 to 25. As you see in this graph, import duty is stable, but the smuggling gold is increased gradually Import duty is from stable, but the 6 या 16 से ठीक है 22 तक फिर देखिए अब कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो इससे आपका इंपोर्ट ड्यूटी से कोई ही लेना देना नहीं है कि आपका कितना स्मगलिंग हो रहा है. इंपोर्ट ड्यूटी आप नीचे करो या ऊपर करो, आपका स्मगलिंग गोल्ड जो है वो बढ़ते ही जा रहा है एनुअल बाय एनुअल. तो ये क्लियरली बता रहा है कि पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट स्मगलर. And basically, my adding point is like you also gave in your rebuttal, like you explained in very well manner that smuggling is not basically we are talking about gold, but you also said that the other things are also being done as in dabba trading. You justified, right? So we all know as in country that the policies are not that effective in other yeah, parameters too, because they are the same government, the same organization, the same parliament is there, which we elected ultimately and fortunately to make it right, but they are unable to do it. That's the whole point. So if we are doing one thing at one point, as in like we can do it wrong, right? So ultimately the other parameters are also being feasible for the people who can do wrong. They can do it, right? So here we are talking about gold, as our numbers are justifying the true picture that it doesn't help at all. And you also agreed at a point in time that it happens around the picture, around the circle, in other aspects too, right? So absolutely. If you that's see it, if you see it the other way, see like Take minute. Do you like want to give your time? Do you want to give your time, Josefa? Or do you want to uh, keep talking? Yeah. yeah, I can give time. Acha, go ahead. Go ahead. okay, thank you so much, Josefa. So as I was saying that if you look at to the positive side, see rising smuggling क्या दिखाता है? It this activity somewhere shows that there is strong domestic demand, not economic harm, right? Higher demand for gold is an opportunity, not at all a weakness. So it's up to the system how to channelize it properly. Of course, there are going to be people who are going to find loopholes and everything, but what the government is already doing right now with the digital gold and the IIBX, which is the India International Bullion Exchange, which converts the physical demand into formal financial demand. So instead of calling this as a problem or gold entirely as a problem, we are monetizing it. So we are turning the savings into capital. So India is not really suffering because of gold. It's learning to turn gold demand into economic strength. And as we have seen, the data with Javed showed that this time around we have duties at 6%. Right. The government is constantly trying and playing with the numbers, which they can come to a sweet spot, which they can try to solve this smuggling problem. So if gold obsession was, truly draining the economy,
these indicators, not only the indicators shown in this question, but indicators in the entire debate, right? They would be collapsing, but they haven't till now. So ठीक है, my चलो हो last गया, अपना रिबटल हो गया, राइट? सो the audience are free to talk for another 10 minutes. Meanwhile, I'll just gather the scores and announce. सिंह सर, कोई भी पॉइंट हो शेयर कीजिए। सर मैं डेटा देख रहा था टॉप 10 एम्प्लॉयर्स का, उस पर बात करेंगे क्या? हाँ हाँ, श्योर श्योर, अच्छा नहीं वाई नॉट। लगेगा आपको डेटा? तो टॉप 10 एम्प्लॉयर में से टॉप 5 तो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस 14 लाख, इंडियन रेलवेज 12 लाख, पैरामिलिट्री 9 लाख। सो इनका मिला के टोटल, पैरामिलिट्री प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन पोस्ट प्लस रेलवे, इनका मिला के लगभग अराउंड 45 लाख एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ये, ठीक है। और उनमें से बाकी निकाल दो, टॉप जो रह गए 4-5 रह गई जो अपनी HCL, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी एंड टाटा ग्रुप, इनका मिला के देखें तो दे आर आल्सो लाइक 40 to 45 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो द द नंबर, अपनी पॉपुलेशन देश की देखो और ये इनका एम्प्लॉयमेंट रेट देखो, दिस इज नॉट इवन लाइक हाफ ऑफ % की। तो टॉप आप तो 10। टॉप 10 को पकड़ रहे हैं ना, टॉप 10 से आप पूरे देश को थोड़ी ना एम्प्लॉय कर पाएंगे। हाँ, तो मैं NBFCs की भी बात कर रहा था। अभी देखा जाए तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर देखा रियलिस्टिकली देखा जाए तो 80% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अभी ये ग्रे इकोनॉमी से ही आ रही है। मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं है स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनसे कुछ लेना देना ही नहीं, जो इंडिया की अभी सिचुएशन है। तो हमें नहीं तो उन लोगों वही को तो चेंज करना चाहिए ना, वो वही चेंज तो सर चेंज करना है। देखो, जो अपना अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है, इमेजिन करो, वो अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी इज नॉट डूइंग एनी ग्रेट बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। उस अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयज हैं, नो दे आर द बेनिफिट है। वंस दैट आर बीइंग बैटर्ड बाय द सिस्टम। तो इसमें इसमें अगर देखा जाए तो अपना अभी जो अपने चल रहा है इसमें सिर्फ गोल्ड की बात अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ा ना हो रही है सर। नहीं, कौन सा इन्वेस्ट स्ट्रक्चरल किया प्रॉब्लम है है। आपने? किया ही नहीं है आपने इन्वेस्ट। कितना टोटल मनी जो इन्वेस्टेड है, सिर्फ 9% हमने इन्वेस्ट किया अपना वेल्थ स्टॉक मार्केट में आज की डेट में। आफ्टर ऑल द टॉक अबाउट ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट, एक ओनली एक नाइन डेटा और परसेंट देखना चाहिए सर, इन्वेस्टमेंट। अपने को एक कंपेयर डेटा करो और दूसरी कंट्रीज का, दे आर इन्वेस्टिंग 35% ऑफ देयर वेल्थ इन द ओके। स्टॉक मार्केट, इसका एक राइट? काउंटर करता हूँ सर मैं। अगर लास्ट मैंने एक स्क्रीनर निकाला, उसमें लास्ट 3 इयर्स के IPOs आ रहे हैं, तो लगभग काफी मतलब हंड्रेड्स में थे IPOs, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए, अगर मैं क्लिक करूं प्रॉफिटेबल, तो उनमें से गिने चुने प्रॉफिटेबल है IPOs। तो स्ट्रक्चरलाइज प्रॉब्लम भी तो है ना। अभी हमारे पास जो आ रहा है डेटा, जो कंपनीज आ रही है मार्केट के अंदर, वी डोंट नो कि उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है और क्या नहीं है, तो हम नहीं, अननोइंगली किसी को बोल नहीं सकते ना वो भी इसमें मार्केट में लगाओ आप। जितनी भी कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, दे आर स्टेइंग प्राइवेट। वो मार्केट में आना नहीं चाह रही, तो राइट? बर्डन तो उनसे देना चाहिए ना हमें भी यार, आप मार्केट में आओ और इकोनॉमी में पार्ट बनो, नहीं एक तो आम आप आदमी को मार्केट अच्छा में तब लगेगा। आएंगे ना जब आप उनको खरीदेंगे। आप खरीदने के लिए पैसा नहीं डालेंगे और बोलेंगे कि मार्केट में आओ, क्यों आएंगे? भाई सर आप आपके पास जेब में पैसा नहीं है उनको खरीदने के लिए, वो अपनी सच्चाई अपनी सच्चाई अपनी कंपनी आपको क्यों बेचेंगे? वो कंपनी जो प्रॉफिटेबल होती है ना सर, वो अपने आप को बेचना चाहती नहीं है। जो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, नहीं जो नहीं, जो अर्न कर रही इसकी है आप ज्यादा, बात, वो उनके भाई, IPOs आते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। देखो, अगर आप दुकान खोलोगे, उसी चीज की खोलोगे ना जो जिसको लोग खरीदने के लिए पैसा लगाएंगे, राइट? अगर आप पैसा लेके मार्केट में नहीं आओगे तो क्यों बेचेगा कोई अपनी कंपनी आपको, राइट? आपको अपना पैसा सारा गोल्ड में लगाना है। आपको उनकी कंपनी का राइट वैल्यू उनको देना नहीं है, तो वो क्यों आएगा अपनी कंपनी बेचने के लिए? सर वो कंपनी बेचने के लिए, जो मुझे लगता है जो कंपनी जितने भी IPOs निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट के लिए ही निकाल रहे हैं। वो खुद चाहते हैं भी हमारा प्रॉफिट हो, जैसी मर्जी हो कंपनी, चले ना चले, जो मर्जी शेयर ये वैल्यू तो हो। नहीं है, ये तो बहुत ही, ये तो ये बोलना हो गया कि सब अपने अरे लिए डेटा जी रहे हैं।
हाँ तो ऑब्वियसली बात है, डेटा अगर अपने देखें, लास्ट लास्ट 3 ईयर का डेटा देखें, कितने आईपीओस हैं, कितने सक्सेसफुल, क्या रेट है उनकी, और वो उनसे क्या फायदा हुआ लोगों के, मतलब कितने टाइम्स इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया और कितने टाइम्स अपनी ओवर वैल्यू दिखा दी। तो नहीं नहीं, अब आप आईपीओ इसके पीछे पड़ गए। आईपीओ से थोड़ी ना जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, जॉब्स क्रिएट तो रिलायंस और टाटा से ही हो रहे हैं ना। जो सर वो नहीं तो नहीं उनका डेटा तो दिखाई दिया सर मैंने आपको, वो तो नॉट इवन लाइक नहीं नहीं, वो नॉट इवन सी 5%। आप टॉप 10 को पकड़ के बैठ गए, टॉप 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। टॉप 10 से क्या होता है? पूरी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसमें 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पे। उसमें से आप टॉप 10 को पकड़ के बोलेंगे कि कोई जॉब्स ही नहीं क्रिएट हो रहे, इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। 30 to 40% जो जॉब्स हैं जो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में है, दे आर कमिंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, राइट? आप टॉप 10 से स्टोरी बनाएंगे, उससे क्या मतलब है? बाकी कंपनीज क्या कुछ कर नहीं रही क्या? आपको क्या लगता चलो है? एक पॉइंट बताता हूँ, अभी इन्फोसिस, एचसीएल और ये कंपनीज हैं, इनको बाहर से काम मिल रहा है, यूएस से ये काम कर रहे हैं, और लोगों ने इन पे पैसा और लगा दिया, तो काम तो उतना ही है ना सर यूएस में जितना वो दे रहे हैं, वो भी अभी एआई रीसेट होने के बाद वो भी शायद कम हो जाए, तो उसमें अब क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट भी, अगर एआई आ रहा है देखा जाए तो, और हमारी इकोनॉमी जो मेजर कंपनीज हैं बाहर से काम ले रही हैं, तो वो एक आदमी का काम पहले भैया, तो करता ए, चलो एआई पकड़ते हैं, आप एआई बोल रहे हैं ना। एआई जो का 5। इन्वेंशन होने से इतने सारे जॉब्स क्रिएट हुए, हुए कि नहीं? तो जॉब राइट। एक्चुअल में जॉब्स इनफैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, इनफैक्ट लेकिन चाइना ने अपना एआई क्रिएट कर लिया साइड में। वो तो ऑब्वियसली मैं, राइट, जॉब अगर हमने क्रिएट वो कर रहे गोल्ड में हैं। पैसा नहीं लगाया होता और हम अपना खुद का एआई बना रहे होते, तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता क्या उसको? सर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज तब करेगा जब एआई अपना compete करेगा, चाइना का एआई एक्चुअल में अच्छा है तो सर, वही मैंने ना, सारे compete तो रिपोर्ट्स। तभी करेगा जब हम अपना पैसा वहां लगाएंगे। अभी तो आपका घोड़े को आप चने नहीं खिलाओगे और उसको बोलोगे कि भाग। फिर तो एक पॉइंट आना चाहिए भी, जो आईआईटी कर रहे हैं इंडिया में बच्चे, उनको जाना नहीं चाहिए यूएस से, उनको तो इंडिया में रह के करना चाहिए अपने नहीं ना, आप स्किल्स पैसा डेवलप आप अपना करना गोल्ड में लगा के रखेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे बाहर? वो डॉलर्स के लिए बाहर जा रहे हैं ना। चाहिए आप यार। गोल्ड से हटा के पैसा मार्केट में डालिए, वो आ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। तो अपनी आप मार्केट में अपना पैसा आप गोल्ड में लगा के रखेंगे और बोलेंगे कि भैया इंडियंस बाहर मत जाओ, ऑफ कोर्स वो जाएंगे। जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी जाएंगे। यहाँ आप अप, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ रहेंगे। अपने देश की इतने 75 ईयर्स हो गए आजादी को, और अपनी एक कंपनी बता दो ग्लोबल है जो पूरे वर्ल्ड में सर्विस दे रही हो। नहीं तो वो आप अब सी आप अगर मैं बात ही यूएसए में वही रहता हूँ, टेढ़ी सी कर रहे हैं। आप पैसा डालेंगे नहीं कंट्री में तो कैसे अच्छी कंपनी बनेगी? सर कंपनी अच्छी तो अपने प्रोडक्ट से बनती है ना सर, वो एक बार बड़ी होने के बाद तो वो तो बात की प्रोडक्ट बात है। बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। सर आप पैसा। क्या, वही वही मैं कह रहा हूँ, आप एक बंदे को भूखा प्यासा रखेंगे और बोलेगी कि भैया ओलंपिक का वर्ल्ड का गोल्ड मेडल जीत क्या, जीतेगा क्या? वो आपका आप पॉइंट भी अपना सही है। पैसा सब गोल्ड में लगा के रखेंगे और हम्म। उसको बोलेंगे कि तू भाग, और ऐसा भाग कि ओलंपिक मेडल जीत गया। तो कोई सर मैं मतलब है क्या इस बात का? ओलंपिक मेडल भी वही जीता है ना जिसमें खुद में पोटेंशियल है, अभी वो करने की पोटेंशियल तो उसमें वही ना, बंदे। पोटेंशियल देने के लिए उसे खिलाओ पिलाओ तो पोटेंशियल आएगा। तो आप उसको वही तो, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं और बोलेंगे तू तू करके दिखा भैया, करके अपना दिखा फिर तेरे को कंपैरिजन खाना दूंगा। अपना तो कंपैरिजन ऐसे यूएसए करके में करते हैं, और यूएसए की सर टॉप 50 कंपनी भी निकाल लें तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड सर्विसेज अपनी दे रही देखो, हैं, और वहां यूएस पे का कम यूएस कमाते का हैं। सीधा बात बताता हूँ। यूएस की सारी कंपनीज इंडियंस चला रहे हैं, राइट? इंडियन उनको इंडियन चला। सैलरी दो ठीक से, वो इंडिया की कंपनी चलाएंगे ना, लेकिन आपको तो अपना पैसा गोल्ड में रखना है। सर ये तो सर पॉइंट अभी वो, इनके गोल्ड की से तो लेना देना तो होगा नहीं ना सर इसका, क्या अभी पहले। बात कर रहे हैं बस सर? अपना 20% वेल्थ आप एक चीज में लगा के रखेंगे और बोलेंगे ये मैं तिजोरी में रखा हूं। चाहे कंट्री जाए भाड़ में, मेरे को अपना पैसा तिजोरी में रखना है। तो नहीं नहीं कंट्री सर कहाँ ऐसा से नहीं है। प्रोग्रेस करेगी? कंपनी, जो इन्वेस्टर है वो अपनी सेफ्टी देखेगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये चाहिए कि मेरा पैसा बढ़े जहां मैं लगा रहा हूँ। तो वही मैं, देखो मैं इन्वेस्टर की बात बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्टर की बात करनी है हाँ, ना, इन्वेस्टर की बात बता रहा हूँ। अभी जो कंट्री लीड कर रही है ना वर्ल्ड को इकोनॉमी में, वो अपना आधा परसेंट गोल्ड में लगा रही है। क्योंकि आप उनके लोगों का और कुछ नहीं तो उनके जो लोगों का क्लास में फर्स्ट आ रहा है उससे ही कुछ सीख लीजिए, राइट?
सर वो आधा पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो उनकी कंपनीज ऐसी हैं, उनके वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं उनके देश में, जो वो वहां पे उनको सेफ फील होता है। तो अपने वो इंडिया में उनको पैसा डालते हैं ना, इसीलिए वो बनाते हैं ऐसी कंपनी। आप मतलब आप तो सिर्फ मेरा पैसे पॉइंट मेरे को ही से नहीं समझा रहे होते हैं सर, क्या। पैसे से आप नहीं, सिर्फ मजा आ पैसे से गया आज आपसे बात करके नहीं सिंह। सर, सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता ना, वो उनके पास इंटेलेक्चुअल भी है ना उस चीज का अरे करने का। इंटेलेक्चुअल हमारा है, इंटेलेक्चुअल हम जा रहे हैं वहां इंटेलेक्चुअल लेके। नहीं सर, अपने तो वहां एम्प्लॉय हैं, कौन सी एम्प्लॉय। कंपनी लीडिंग है? गूगल है, पिचाई है, पिचाई तो सर नटेला है, एम्प्लॉय है ना, उसने राइट। डेवलप करना, उसने बनाया थोड़ा ना सर इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल का, वो तो अभी अब अगर कह दें एप्पल का बंदा नहीं बट कोई। उनको तो रन तो हम ही कर रहे हैं ना। उनको रन करने के लिए आप इन बंदों को यहाँ लाओ, उनको सैलरी दो, वो करेंगे, यहाँ रन करेंगे। तो सर यहाँ पे किस लिए किस क्या ऐसा प्रोडक्ट आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में क्या ऐसा डेवलप हो रहा है, किस में पैसा लगाऊंगा बताओ, चलो आपको क्या लग रहा है इंडिया में कुछ आप ऐसा डजन होगा? डायमंड्स में लगाओ पैसा, देखो हम बना के देते हैं आपको पैसा। डायमंड तो चलो, और ये तो है ही अपनी कंपनी, वैसे अगर नहीं देखा जाए तो अभी जो आ रहा नहीं, है। आपने पूछा कंपनी किस में डालूं, मैं आपको बता दिया कंपनी किस में डालूं। लिस्ट करेंगे सर इसका तो लिस्ट नहीं हुई ना अभी प्री अपने लिस्ट में इन्वेस्टिंग हो सकती है तो देख लेते हैं मैं उसमें कहाँ। सीधा बात बोल रहा हूँ सर, आपको मैं 100 गुना पैसा आपके करके दूंगा 5 साल में। सीधा सीधा साधा मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपका चॉइस है, लगाना है लगाओ, राइट। आपने सही है, पूछा, मैंने जवाब दिया। वो तो सही है वो तो, हम्म, लेकिन हमारी भी एक सर्विस कंपनी है देखा जाए तो, हाँ जी। नॉट मैन्युफैक्चरिंग नहीं एनीथिंग और। ये तो हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। अभी ये नहीं है कि हम जिंदगी भर ब्रोकरेज ही करते रहेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। अभी तो हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। तो मेरा सिंपल, मैंने अभी तो देखा अपने डजन डायमंड में, डजन डायमंड हैव अ गुड स्ट्रेटजी, और हमें लोगों को अभी रिजल्ट ये देना है कि आपने हमारे स्ट्रेटजी के थ्रू इन्वेस्ट किया, चाहे जिसमें भी कर रहे हो। बल्कि मुझे तो लगता है गोल्ड में अगर अपनी स्ट्रेटजी चले तो अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि गोल्ड तो कभी नीचे जाने वाला है नहीं, कोई 5-10% चला भी जाए साल में, वो भी वो रेयर चांस है, लेकिन वो इवेंचुअली ऊपर जाएगा, और फ्लक्चुएशन उसमें रोज होती है। तो बहुत ज्यादा मेरे को तो लगता है बेनिफिट ज्यादा ही लग रहा है इसके अंदर कि अपने गोल्ड के उसमें करे तो देखा जाए तो। लेकिन एक अब मिनट सर, मैं थोड़ा स्कोर्स ऐड कर लूं, मेरे को 1 मिनट देना, करते हैं ठीक है। डिस्कशन। नहीं, आप कंटिन्यू करो डिस्कशन। बट इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड, इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर, इट्स जस्ट दैट आई एम डूइंग द नंबर्स राइट नाउ, ठीक है ना। नहीं 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 सर, आगे बार कर लो फिर, आप आंसर से अच्छा तभी लगता है सामने से काउंटर आ रहा हो अच्छा ठीक है, फिर 1 मिनट दो मेरे को, 1 मिनट में। तब तक एनीबडी एल्स वांट्स टू मेक अ पॉइंट, प्लीज गो अहेड। So true to its reputation, instructor team pulled ahead. The when the competition started, the sales team was giving good competition, but towards the end, the instructor team pulled ahead. The final scores are 132 to 108. Instructor team won. In all three categories, instructor team was ahead. There were times when the sales team was pulling ahead, but finally, instructor team figured out how to get past the competition that the sales team was giving. Congratulations, instructor team. एंटी Thank you, sir. गोल्ड टीम जीती है क्या? हाँ, गोल्ड जीत एंटी गया। गोल्ड, गोल्ड वाली जीती है। गोल्ड वाले जीत गए सर। हाँ। Nice debate, guys. Josefa, Javed. अभी थैंक यू। बेसिकली सेल्स टीम हैज अ बिग चैलेंज अहेड। ऑल द बेस्ट टू द सेल्स टीम। लास्ट डिबेट में आप अच्छा कीजिए। देयर इज स्टिल होप फॉर द सेल्स टीम। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर एनी फ्यूचर। क्या इसका तो हो गया ना डिबेट? तुम्हारा तो खत्म हो गया, राइट, Instructor इंस्ट्रक्टर टीम team. का? Yeah, Yes, yeah. yes, sir. We have done. अच्छा अच्छा, बोलिए सिंह सर, अब अपने को कोई रोकने वाला नहीं है, बोलिए। अपने सबसे पहले अपने एआई पे बात करते हैं। अभी जो सबसे जो इंडिया की पार्ट है, एक मेजर पार्ट इकोनॉमी का, अभी बाहर हम्म। से काम आ रहा है और इंडिया वाले करके दे रहे हैं, तो वो नहीं धीरे देखो, धीरे मेरे इसी। दिमाग में तो आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरे दिमाग में
एआई और वो 2000 का वो जो आया था ना, क्या था 2000 का? इंटरनेट बबल। नहीं नहीं, इंटरनेट बबल नहीं, Y2K। वाई वाई टू टू के के और एआई में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। वाई राइट। टू के क्या था सर? जब 2000 हुआ था तो उस टाइम ये इशू चला था कि जब 2000 ईयर आएगा तो सारे कंप्यूटर्स फेल कर जाएंगे, बिकॉज 2000 का काउंटिंग सिस्टम, जो डेट सिस्टम है सब सिस्टम्स में, सब कंप्यूटर सिस्टम में, वो फेल हो जाएगा जब ओके। 1999 से 2000 का ईयर आएगा। उस टाइम पे ये बबल चला, ये फैड चला था कि ये 2000 का कंप्यूटर सिस्टम हैंडल करने के लिए इंडिया से इंजीनियर्स हायर हो रहे थे यूएस में, टू मैनेज देयर कंप्यूटर्स, बिकॉज दे वर ऑल अफ्रेड कि 2000 जब आएगा तो सारे कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस स्टोरी। नहीं नहीं, ये स्टोरी नहीं बता। वो ये बबल इंटरनेट बबल का था वाई अभी, टू हाँ। के देखिए, Y2K आप चेक कीजिए। Y2K was the biggest fad that could have ever happened in the computer industry. कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ये कंपनी ने धड़ल्ले से खर्च किया, बिकॉज एवरीबडी वाज स्केर्ड कि हमने नहीं किया तो क्या होगा। ये तो सेंस भी नहीं बना सर बात का। कंप्यूटर है, डेट्स को हैंडल कर लेगा, वो तो एक बारी नहीं में नहीं, हैंडल वही कर। वही इशू यही था कि उस टाइम जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे, देयर ठीक है वाज बेबी। दिस बिलीफ कि दे आर नॉट डिजाइन टू हैंडल द 2000 ईयर 2000। बट आज नहीं ये सर। लगता है, आज ये लगता है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम था, बट एट दैट टाइम देयर वाज अ रियल फियर अबाउट दैट। यू जस्ट चेक आउट Y2K। कोई करेगा क्या जरा फटाफट? अभिनव तो जरा शेयर करेगा आप स्क्रीन। सिचुएशन को आप एआई से कन्वर्ट रिलेट करके बोल रहे हो, और आप कह रहे हो कि इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा एआई से, नहीं नहीं, कह रहे हो? एआई से जो इम्पैक्ट आना था वो आएगा, बट हम एआई को ये समझ रहे हैं कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस, वो नहीं होने वाला है। नो नो राइट। नो नो, इट विल रिप्लेस। कि अगर आज मेरे को 5 बंदों की जरूरत है ना, तो वो एआई एक बंदा हैंडल करके कर लेगा काम, वही वाला। नहीं नहीं, लेकिन जो काम देखो, कंप्यूटर विल ऑलवेज डू द वर्क दैट ह्यूमंस एक्चुअली डोंट वांट टू डू। राइट। ट्रू। फाइनली द पॉइंट इज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू मेक ह्यूमंस मोर ह्यूमन। दैट इज द फाइनल पर्पज ऑफ कंप्यूटर। अगर वो 5 बंदों में से आप सिर्फ एक बंदे से काम कराना है, इसका मतलब वो 4 बंदे कुछ नया इनोवेट करके लाएंगे। वो जॉब जाने के बाद घर पे नहीं बैठेंगे, वो कुछ नया करके दिखाएंगे। वो सर राइट। दो टाइप के एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास। एक कंपनी के पास एम्प्लॉयज हैं बेसिक लेवल के, जो सर्विस कर रहे हैं, रेगुलर सर्विसेज। एक एक है क्रिएटिव एम्प्लॉयज। तो हमने मान सकते हैं, चलो क्रिएटिव एम्प्लॉय का काम कम हो गया और वो कुछ और क्रिएटिव सोच रहे हैं, लेकिन वो जो मतलब जो कंटिन्यूसली लेबर टाइप कर रहे हैं अभी, चलो अपनी शिफ्ट लगा रहे हैं 8 घंटे की, उनको उनकी जरूरत नहीं नहीं, होगी ना लोग। ये प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये प्रॉब्लम ट्वेंटीज 1920s में आई है, 30s में आई है, 40s में आई है, 50s में आई है। हर रेवोल्यूशन के साथ, हर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम आई है। या ट्रू। राइट। और तो हर बार कंप्यूटर हुआ है काम। ह्यूमंस ह्यूमंस फिगर आउट हाउ टू बी ऑन टॉप ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, जो एआई से बन रहा है डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बेनिफिट। राइट। बट देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इनोवेशन। मैं आपको सीरियसली स्टोरी बताता हूँ आपको। पहले याहू था। हम्म। राइट। जब याहू आया था, आई सैट डाउन विद माई फ्रेंड्स एंड सेड कि याहू इज नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग, देर इज रूम फॉर अ बेटर सर्च इंजन। हम्म। उन्होंने बोला क्या बात कर रहा है यार, याहू है ना, और क्या चाहिए। गूगल हम्म। आया। जब हम्म। गूगल आया मैंने बोला दिस इज नॉट द एंड स्टोरी, देर इज अ बेटर स्टोरी देन दिस स्टोरी। राइट। अभी एआई आया, या गूगल एआई का हाल ब्राउजर खराब हो गया। आ चुके हैं, एआई ब्राउजर। चैट Pardon? जीपीटी ने निकाल दिया और चाइना ने भी निकाल दिया। राइट। पहले तो हमने मेरा गूगल कहने पे। का मतलब यह है कि इनोवेशन तो होता रहेगा, एआई के बाद और इनोवेशन होगा। राइट। राइट। एआई इज नॉट द एंड ऑफ द। देखो मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ, 1980s में भी एआई आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तब भी होती थी 80s में। इनफैक्ट इसका इसका एक एड आया था आईबीएम का, जिसमें सब पीसीज को ऐसे कंधे पे लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे हमारी फैक्ट्री का सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एआई जस्ट कीप्स टेकिंग न्यू फॉर्म्स। जो आज आपको एआई लग रहा है, कल कोई नया चीज आएगा उसको भी एआई बोला जाएगा। एआई ये इज नथिंग बट अ बिग डिक्शनरी, नथिंग मोर देन कंप्यूटिंग अ पावर डिक्शनरी। इंक्रीज है। ये कोई राइट। कंप्यूटिंग पहले जो
मतलब जितने कमांड्स लेता था एक बारी में, वो अब काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है, बस नहीं इतना नहीं, है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एआई का फॉर्म भी चेंज होता गया है। एटीज में भी एक एआई आया था। एटीज में पूरा जो बॉस्टन एरिया था, हम्म, वहाँ एआई कंपनीज भरी पड़ी थी, राइट। तो जिस तरह से आज आप एआई रेवोल्यूशन देख रहे हैं ना, एटीज में भी एक ऐसा ही रेवोल्यूशन आया था, राइट। मेरा कहने का पॉइंट यह है कि इनोवेशन इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इनोवेशंस होते रहेंगे। हमको बस फिगर आउट करना है कि अगला इनोवेशन क्या होगा, एंड वी हैव टू डू द नेक्स्ट इनोवेशन। और इनोवेशन ये सोच के नहीं आता है कि मैं फिगर आउट करूंगा कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है और मैं इनोवेट करूंगा। इनोवेशन आता है पर्सनल नीड से। आदमी को अपना नीड समझ में आता है, वो उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करता है। जब वो फुलफिल करने की कोशिश करता है तो देखता है कि जो मेरा नीड है वो पूरी दुनिया का नीड है, ट्रू। राइट। उस नीड को, अपने नीड को सेटिस्फाई करने के प्रोसेस में वो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर जाता है। तो हमको उस लेवल पे सोचना, हमको ये नहीं सोचना है कि मैं दूसरों के लिए क्या करूं, मैं दूसरों के लिए क्या बनाऊं। हमको अपनी प्रॉब्लम समझनी है। हमारा जो एम्प्लॉय है आज भी, उसको टाइम वेस्ट करने में ज्यादा विश्वास है, काम करने में कम विश्वास है, राइट। राइट। मैं डजन डायमंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप सही कह अभी रहे हो भी सर। हमारा स्लेव मेंटालिटी है। हमको कोई बोल दे एक जगह बैठ जाओ, तुमको तनख्वाह मिल जाएगी, हम बैठने को तैयार हो जाएंगे। ये हम ये मेंटालिटी नहीं नहीं है सोचेंगे सर। कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उस प्रोसेस में। इसका एक एक आंसर देता हूँ मैं सर। स्लेव मेंटालिटी नहीं है, इट्स अबाउट सर्वाइवल वाली बात है। इंडिया में सैलरी इतनी मिलती है कि बंदा अपने सर्वाइवल में भी फंसा रहता है और उसमें भी एनर्जी वेस्ट अरे करता तो है। मांगने की हिम्मत रखो ना, कुछ करके दिखाओ। मांगने की हिम्मत रखो और सैलरी कुछ ऐसा मांगने की करके हिम्मत। दिखाओ जो तुमको सामने वाला भी देने को तैयार हो जाए। तो यही पॉइंट तो सर मैं आपको पहले बोला था, अभी अपने कंपनीज हैं, कुछ करके दिखाए ना, कोई प्रोडक्ट ऐसा निकाले रेवोल्यूशनरी। अपने क्यों नहीं बना ओपन एआई, या फिर अपने अगर इंडिया में बन जाता ओपन एआई तो सारे लगाते ना उस पे, वो जाती ना ग्लोबल कंपनी। तो उसमें तो हम नहीं, बोल रहे हैं भी पैसा बनेगा, और जो वो बैकबोन है देखो कंपनी की, वो हम कह रहे हैं भी देखो, आप करके दिखाओ ओके पहले। ओके, आई टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन, आई टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। इफ यू टेक अ कंट्री लाइक चाइना, राइट, imagine how much investment they make in their sports teams, right? ट्रू ट्रू। Compare that to the amount of investment we make in our sports teams at the country level, at the government level, right? Of course, with all that investment, their teams are going to perform better, right? It आपने is not कॉन्ट्रडिक्ट like किया सर अभी। their genetics is different, or they are some special superpower that they do so well in sports. They do well in sports because the country invests in them, right? If India does not invest in its companies, how can you expect the companies to perform? अभी सर आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया अपना पॉइंट। क्योंकि कंपनी के टाइम में अभी अपने आ जाते हैं कि यार कंपनी में पहले इन्वेस्ट। चलो मैं एक आपको एक और थ्योरी देता हूँ। द प्लेस वेयर आई एम फ्रॉम, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में। अच्छा। तो स्किल सेम है, वो सब इतना भी नहीं है भी यार भी कुछ वो खास कर रहे हैं। वो वहाँ पे ड्राइविंग करेंगे, और वो वहाँ पे कुछ भी ऐसे बेसिक काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको जो सैलरी मिलेगी, और वो इंडिया में काम जो 1 घंटा नहीं कर सकता ना यहाँ पे बंदा, वो वहाँ पे 10 घंटे काम करता है, खुशी खुशी काम करता है। क्योंकि वो उसकी जो अ, मतलब एक बैलेंस बना हुआ है ना दिमाग के अंदर भी, हाँ यार मेरे को इतने काम के इतने डॉलर्स मिल रहे हैं। तो वो मोटिवेशन वहां से आता है कि यार चलो कोई बात नहीं, इतने पैसे मेरे को मिल रहे हैं तो इसलिए मैं काम खींच सकता हूँ ज्यादा। अगर अपने बंदे को बिठा के रखें और उसको बोलें कि यार नहीं है तेरे को तो इतने मिलने हैं, तो उस चीज में तो वो भी मोटिवेशन जाता है ना सर। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम दोनों ही बात कर रहे हैं, राइट। दूसरों को हमारी बातों से क्या सुनाई दे रहा है, एक मिनट वो सुनते हैं। हाँ सुनते हैं चलो। चलो कोई और बता दे उनको क्या समझ में आ रहा है हम दोनों की बातों से। भाई सैलरी बढ़ने के चांस है, ढंग से बताता। बताओ बताओ। नहीं, सैलरी कौन से बताएगा? सैलरी से अभिनव, लेना देना ही नहीं है हमारा, इक्वल। अभिनव बताओ। हाँ। भाई मैं ये बोल रहा हूँ भी सैलरी अच्छी हो नहीं, एक बंदे का। मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, अभिनव बताओ, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है हमारी बातों से? सर, आप दोनों की बातों से ये समझ आ रहा है कि आप ये एम्फोसाइज कर रहे हो कि एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पूरे नेशन की। और हम्म। ये सिंह साहब ये बोल रहे हैं कि नेशन कुछ करेगा तब जाके ही मेरा सैलरीज बढ़ेगी या मेरा ये इम्पोर्ट बढ़ेगा, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वाया कंपनीज। राइट, अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। बढ़िया कैप्चर किया है वैसे अभिनव ने। राइट कमल, डू यू एग्री? अभिनव डिड अ गुड जॉब एट कैप्चरिंग आवर पॉइंट्स। थोड़ा सा ऑफ है, मतलब कि अभिनव के
देश मतलब कुछ इनोवेटिव होगा तो अपने आप ही उसमें इस चीज में पैसा अपने आप आ जाएगा, लोग लगा देंगे जिनमें जहाँ पे पर करेगा अपॉर्चुनिटी। कौन? देश देश इनोवेटिव होगा, देश को इनोवेटिव बनाएगा कौन? मुझे ऐसा लग रहा है बस अभी बात ये हो रही है कि तुम इनोवेट करो, खुद इनोवेट करने का कोई सोच नहीं रहा है। सही। को तुम किसको तुम बोल रहे हो? नहीं मतलब जैसे अभी सिंह सर जो बोल रहे हैं कि इनोवेट करना चाहिए, कंपनियों को इनोवेट करना चाहिए, कंपनियों को मतलब, बट एक इंडिविजुअल भी अगर सोचे कि मुझे इनोवेट करना है कुछ, तो वो आगे वो इनोवेट कर सकता है। तो हम वही तो ये सोच रहे हैं ना, हम तो वही मैं सोच कह रहा रहे हूँ ना। हाँ, हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग इंडिविजुअली अपने लिए सोचते नहीं है कि मैं इनोवेट करूंगा, मैं ये ट्राई करूंगा। ये थिंकिंग नहीं है इंडिया में, बहुत नहीं, कम मैं दिखती है एक मुझे। और बात बता दूं आपको। नहीं बस सिंह सर, बट एक सर। बात मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। राइट। यूएस में आप जाएंगे ना, वहां जो जैनिटर भी है, जो टॉयलेट भी साफ कर रहा है ना, आप देखेंगे उससे आप बैठ के आधा घंटा बात करेंगे, आपको लगेगा ये अपने आप को इलॉन मस्क समझता है। समझेगा सर, सही है। राइट। तो उसको लेकिन ट्रेन यहाँ पे कंपनी का सीईओ भी होगा ना, बोलेगा मेरा ये जॉब छूट गया तो मेरा क्या होगा? तो यही प्रॉब्लम है, वही तो सर्वाइवल वाली बात आ जाती है ना वहां पे नहीं, वो। सर्वाइवल की बात ही नहीं है। सर्वाइवल माइंड क्या, वो सीईओ का सर्वाइवल का प्रॉब्लम है क्या? वो जिंदगी भर काम ना करे तो भी उसके पास काफी है सरवाइव करने के लिए। उसके मैं आपको बता दूं, ये बात ईगो की है। वो ट्रू अपने है, आप को बिना जॉब के सोच ही नहीं सकता। सही है ये बात। वो पहले अपने वाइफ को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मेरा जॉब छूट गया? उसके दिमाग में वो चलता रहता है। राइट। उसको अपनी सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करना है, उस स्टेटस के लिए उसको वो जॉब चाहिए, वो जॉब छोड़ेगा ही नहीं उसके कारण। कभी ये सोचेगा ही नहीं कि मैं घर पे बैठ के कुछ इनोवेट करता हूँ। सही है। तो राइट। ये तो एक माइंडसेट चलता आ रहा है ना अपने, क्योंकि माइंडसेट का ही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए हम डिबेट्स करवा रहे हैं। मेरे को माइंडसेट भी नहीं चाहिए चलता आ कि रहा है। मेरे एम्प्लॉयज वो माइंडसेट रखें जो बाकी कंट्री में चल रहा है। या ट्रू, बट ये इस पे सर अगर देखा जाए तो इसको डीपर प्रॉब्लम को अगर देखा जाए अगर और डीप जाके, तो अपनी कंट्री की सारी इकोनॉमी भी तो डिपेंडेंट इसी चीज पे है ना, अभी सामने से अपने पास काम एग्जैक्टली आएगा। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम माइंडसेट तो है बदल ना। दो ना, ये कंट्री बदल जाएगी। माइंडसेट बदल दो। कोई रीजन नहीं है हमको अपने आप को 4% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बोलने का। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। जो दूसरी कंट्रीज कर रही हैं हम उससे बेटर कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है। ये तो है। चलो इसी बात पे रैप अप करते हैं। आपने मेरा माइंडसेट चेंज किया, मैंने होपफुली आपका थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है ना? माइंडसेट तो सर मेरा तो माइंडसेट वैसा है जैसे आप बोल रहे हो, सही कह रहे हो उस डायरेक्शन में, लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूँ जब इंडिया का, तब वो थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है अभी। हाँ यार। चेंज करेंगे ना, हम अपने आप को बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदलेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, चलो। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट सिंह सर, एज ऑलवेज यू आर अ ग्रेट एडिशन टू आवर डिबेट्स। आई डोंट नो हाउ वी मैनेज टू फाइंड यू, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू हियर। ठीक है गाइस, चलो रैप अप करते हैं। थैंक यू भाई। चलो। पल्लवी जी, डिड यू एंजॉय? Pallavi ma'am, did you enjoy the debate?